अनुभव से हम सभी लोग लाभान्वित होंगे और अपने भविष्य में जो भी हमारे हेल्थ संबंधी इश्यूज होंगे या हेल्थ को जिस तरीके से हम आज तक ले रहे थे, मुझे लगता है कि आज हमको आपकी इस प्रतिनिधित्व के कारण एक नया मार्गदर्शन मिलेगा और हम सब लोग आपके ज्ञान से, आपके अनुभव से लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आज की मीटिंग के लिए मैं डॉक्टर गीता इब्राहिम मैम, रिटायर्ड प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग निर्मला निकेतन मुंबई, डॉक्टर वीना यार्डी मैम, रिटायर्ड प्रोफेसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग निर्मला निकेतन मुंबई, और डॉक्टर रूपा राव मैम, एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग निर्मला निकेतन मुंबई, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। और आज की मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों को, चाहे वो ग्लोबल लीडर्स फाउंडेशन के लाइफ मेंबर्स हों, नॉन मेंबर्स हों या हमारे जीएलएफ महा गुजरात चैप्टर के मेंबर्स हों, आप सभी लोगों को एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी श्रृंखला में मैं अधिक समय ना लेते हुए मैं चाहूंगा कि आज की मीटिंग के हमारे कीनोट स्पीकर डॉक्टर शेखर अंबाडेकर सर को हम सब लोग ध्यान पूर्वक सुने और उनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन को हम लोग अपने जीवन में प्रतिरूपित करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, अच्छा बनाएं, स्वस्थ बनाएं और एक जीवन को नए उल्लास के साथ जिए। इसी श्रृंखला में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं चाहता हूं कि पुनः आप सभी लोगों को एक बार वेलकम ज्ञापित करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you so much, sir, for those inspiring words and motivating us. Without much further ado, let us dive into today's discussion. I would like to invite Dr. Geeta Ibrahim, our esteemed GLF member and ex-principal College of Home Science, Nirmala Mumbai, a multifaceted person, to introduce the topic of today's webinar and set the stage for our esteemed speaker, Dr. Shekhar. Over to you, Dr. Geeta. Thank you, Dr. Rupa. Namaste, and wish you all a very good evening. On behalf of Global Leaders Foundation, Maharashtra Gujarat chapter, I welcome you all to today's webinar on Dil Ka Mamla, Safeguarding Your Cardiovascular Health. I sincerely thank our chairperson, Mr. Ramesh Tripathi Sarji, for encouraging us in conducting these webinars. I'm extremely grateful to my dear friends, Dr. Veena Yardi and Dr. Rupa Rao, for their meticulous planning for this webinar. A very special thanks to our esteemed speaker, Dr. Shekhar Ambardekar, for accepting this invitation and giving his valuable time in spite of his very busy schedule. I thank all the participants who encourage us with their presence. Cardiovascular diseases, as we all know, are today's leading cause of mortality, accounting for almost 1/4 of deaths in the country. Factors such as urbanization, unhealthy diets, sedentary lifestyle, increased rate of obesity, diabetes are the contributing factors. A concerning trend is the rising prevalence of CVD among younger population in India. This is causing a significant burden on India's healthcare system. Hence, we all need to make concerted efforts to mitigate the burden by taking certain preventive measures. To help us in this process, there could be no better person than our expert for today, renowned cardiologist, Dr. Shekhar Ambardekar, who needs no introduction as he is well known globally. It is an honor for me to introduce Dr. Ambardekar, not only in his professional capacity, but happy to share that he is the elder brother of Dr. Veena Yardi, who is affectionately known as Shekhar Bhau. And to introduce Dr. Shekhar Ambardekar, he had his education at Grand Medical College, Mumbai, after which he took up teaching assignments and he worked for several years in different capacities with the JJ Group of hospitals. He is at present with two prestigious hospitals in Mumbai, SL Raheja Hospital and honorary cardiologist at the two prestigious hospitals, SL Raheja and the Asian Heart Institute.
His special interests are preventive cardiology, where he has presented several papers, written several research articles. He's also writing a lot of articles on preventive cardiology for a lot of Marathi daily newspapers and spreading a lot of awareness. He has number of talks to students, to the laypersons, TV shows, participated in conference and so on and so forth. In spite of his busy practice, he has varied interest in dramatics, photography, literature, swimming, and music. As with every personality, Dr. Shekhar's biodata is very minimal because his actions speak more than his words. However, I was a little intrigued and I did a little bit of background search, and I was lucky to get a little bit of information from his juniors who were with him in JJ Hospital I think in 90s, and one of them being Dr. Ninad Thakre. He has shared something very interesting about Dr. Shekhar, and which we all will endorse definitely. According to, I quote Dr. Ninad, Dr. Shekhar has a very unique sense of humor, which was evident in his portrayal on stage in dramas in GMC. He's extremely humble, honest, and humane, who serves society to the best of his abilities. He's a great disciplinarian, as was evident in one incident which was shared by Dr. Ninad. It's quite a interesting one. It was somewhere in 1990s, and they happened to be traveling past midnight after a very grueling session of drama practice at JJ Hospital. There was absolutely no traffic on the road, and suddenly Dr. Shekhar stopped the car, much to the chagrin of the others who were there, who inquired, "Why are you stopping the car?" So he just smiled and he showed to the signal, which was red. And but his companion says, "But there's nobody on the road, we can just go ahead." He smiled, he waited for the signal to turn green, and then only moved on. This proves Dr. Shekhar Ambardekar is absolutely honest, high degree of integrity, not only to his profession, but to the life on board. Deserves a big hand of applause. I know we are on a webinar, not in person, but yes, sir, we have all our, we don't know how, in what words we can express, but we are all expressing our great, great gratitude to you for being here. And once again, I'm honored to welcome Dr. Shekhar Ambardekar to take over the session. And maybe I can take the liberty and say over to you, Shekhar Bhau, to address us on this very important topic for today. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Dr. Geeta Abraham. And friends, Ramesh Tripathi ji, Dr. Rupa Rao, and all the global leaders. So should I, without wasting, should I start sharing the screen? Yes, sir. One request is that it should be in Hindi, English, right? It should be a mixture of Hindi and English, because we have audience members who don't understand full English, or we have people who don't understand all English. Yeah. So if you could just, it's a request, if you could just speak in both Hindi and English. As per your orders, I'll do that. Yeah, Veena ma'am has said that, so yes. Thank you, sir. Again. It had come just now, actually. Yeah, it will again come. Is it there? Yes, Now? Yes, sir, we can see. We can see. Yeah. Screen this one. Yes, so right in the beginning, let me thank you for joining with this Saturday evening, and without going out for some parties, etc. All of us are here, so thank you very much. And of course, the topic today is Dil Ka Mamla. And Dil Ka Mamla, as you know, whenever we think of Dil, we always think of love, isn't it? And I would love to talk on this topic only. लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन किया गया डॉक्टर के नाते, तो देखते क्या है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी हैव ऑलवेज एसोसिएटेड दिल विथ लव. देखिए ना, सभी जो फिल्में बनती है, गाने बनते हैं, तो कैसे बनते हैं? दिल, दिल से, दिल दीवाना, दिल चाहता है, दिल धड़कने दो, दिल तो मजबूत है, एटसेट्रा.
दिल तो पागल है. Now, there are other parts of the body also, लेकिन I don't hear a film called as टांग तो टेढ़ी है. ऐसा नहीं होता. तो क्यों होता है? That is because we all associate love, and not only love but all the emotions with heart, isn't it? But is it right? ऐसे क्यों होता है? You know, because if you ask me medically, क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर के नाते किया गया है, तो एज अ डॉक्टर प्यार कहां से निकलता है? प्यार दिल से निकलता है क्या? एंड आंसर एक्चुअली इज नो. प्यार या कोई भी दूसरी भी भावना है, इमोशन है, doesn't come from the heart, but it comes from the brain. In fact, it comes from a part of the brain which is called as amygdala. देखिए बहन, उसका नाम भी देखिए ना कैसा है, मार डाला जैसा है, amygdala. And it is this part of the brain जहां से सभी भावनाएं निकलती है, लव एटसेट्रा. फिर भी कवि लोगों ने कविताएं दिल के ऊपर क्यों लिखी, फिल्में दिल के ऊपर क्यों बनती है? Because whenever there is any emotion in your mind and that causes effect all over the body, the most prominent effect that you feel is in the heart. धक 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 होने लगता है. तो लोग सोचते हैं प्यार की भावना मन में थी, धक 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 हुआ, मतलब दिल से शुरू हुआ. दिल से शुरुआत नहीं होती है, दिल के ऊपर असर होता है. The effect is felt on the heart. It doesn't originate in the heart. It originates in the brain. Of course, मैं मानता हूं कि जानने के बाद भी, इसके बाद सभी लोग, आप जो अपने प्रेमिकाओं को अपना दिल देंगे, आप अपना तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें मेरा भेजा देता हूं, isn't it? So friends, let's come to our topic. As a doctor, what is heart? And then I must tell you that heart is nothing else, but it is only a pump. Okay? Pump. Of course, these days pump ऐसे नहीं होते, pump ऐसे होते हैं, isn't it? And why do you require a pump in the body? Friends, अपना जो पूरा शरीर बना है, it is entirely made up of multiple live units called as cells. पूरा शरीर जो बना है, मांसपेशियां हो या हम लोग देखिए अंदर से देखिए तो सर के अंदर जो कुछ है, सीने के अंदर है, पेट के अंदर है, जो कुछ है, they are all made up of cells. We were talking about the brain. Even that brain is made up of cells. और ये सभी सेल्स यानी पेशियां जिंदा है. उन्हें जिंदा रहने के लिए और अपने काम के लिए कुछ खाना जरूरत है, जो पानी हम लोग पीते हैं वो जरूरत है, ऑक्सीजन जो लेते हैं हम लोग, प्राणवायु जो लेते हैं हवा से, उसकी जरूरत है. और ये सभी चीजें सभी हिस्सों को शरीर में मिलना जरूरी है. और कैसे जाती है? वो सब जाती है, हम जानते हैं, थ्रू अ लिक्विड कॉल्ड एज ब्लड. एंड ब्लड हैज टू गो टू ऑल द ऑर्गन्स. और उस ब्लड में हम लोग जो खाना खाते हैं वो खून में जाता है, पानी पीते खून में जाता है, सांस लेते हैं तो हवा से ऑक्सीजन जाता है, वो तो खून में आता है. और ये खून सभी हिस्सों को जाना जरूरी होता है. इट गोज थ्रू सम ब्लड वेसल्स, जो लाल दिखाई गई है, पूरे पूरे शरीर में जाती है, सब जगह जाती है. और सो शरीर में जो जो जरूरी है, ऑक्सीजन का जरूरत है तो ले लिया, कुछ खाना या चलो खा लिया, पानी ले लिया, सभी हिस्सों को ये होगा. एंड whatever is to be discarded has to be put again in the same blood, so that has to go to various parts of the body from where it will go out of the body. लेकिन उसके लिए ये दिल जो है खून को पंप करते रहता है. ये पूरे खून को नसों में पंप करने की जो ताकत है वो देने वाला दिल है, उसका दूसरा कोई भी काम नहीं है. सो दोस्तों, हम जानते हैं दिल का एक ही काम है, खून को पंप करते रहना. और हम जानते हैं दिल कहाँ है, तो हम जानते हैं कि दिल है सीने की बीचों बीच. देखिए इस तरह से वहां होता है और वो पंप करते रहता है नॉन स्टॉप. हमारे शरीर में बहुत थोड़ी बातें ऐसी होती है वो जो कभी भी आराम नहीं करती है, काम ही करती रहती है, चुप नहीं रहती है. उसमें से एक है दिल. क्योंकि दिल ने अगर 4-5 मिनट आराम कर लिया तो वो क्या हो जाता है, हरे राम हरे राम हरे राम ऐसे हो जाता है. सो दैट मीन्स हार्ट हैज टू गो ऑन वर्किंग. अभी ये जो हार्ट है हम जानते हैं सीने की बीचों बीच है, जरा उसका झुकाव थोड़ा लेफ्ट की तरफ यानी बाई तरफ होता है. ये हमारे सामने वाला खड़ा आदमी है, उसका ये लेफ्ट है और ये राइट है. तो हम जानते हैं कि ये लेफ्ट की तरफ थोड़ी बाई तरफ दिल का झुकाव होता है, सीने के बीचों बीच वो होता है. अगर दिल आपके हाथ में दे दिया किसी ने तो आप जानते हैं उसका साइज कैसे होगा, शेप कैसा होगा. इट विल बी लाइक अ क्लेंच्ड फिस्ट ऑफ योर्स. सो दैट विल बी द साइज एंड शेप ऑफ द हार्ट. If we open the heart, and if you remember, we all learnt in the school, और साइंस में सीखे थे हम लोग
कि दिल में 4 खाने यानी देयर आर 4 चेंबर्स, 2 upper chambers of the heart and 2 lower chambers of the heart. Okay, the lower chambers are called as ventricles. So left ventricle, right ventricle. The upper ones are called as atria. Singular is atrium. I So think left we can't see the image. Image we can't see. you can't Sharing see. has stopped, I think. We can't see Yeah, the sharing image. has stopped. Is it? I Only don't know. now. Only From now, my- sir. The previous slide we could see. Just now it stopped. Is it? Because from my side, I can't now do it because unless I stop sharing again. No, you know, Yes, to start sharing. you minimize from top and then share again. Share again. Minimize from top, go down, and then you'll able to do. And then it must have sharing must have stopped, I think. Is it? Hmm. Automatically. Uh-huh. Yes, yes. It's coming. Okay. It's a- Yes, we can see now. Okay. Okay. Now can you see? You can see or not? Yes, 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 sir, we can. Yes, sir, we can see. see. Okay. Thank you. I don't know, such problems keep coming. So the left lower chamber, that is the left ventricle, is the main pump. It pumps the blood into the biggest blood vessel called as aorta. वहां से aorta से it goes all over the body. You know that aorta goes towards the neck, doesn't enter the neck, turns on itself, goes down in the chest, in the abdomen, and on its route it keeps giving branches so that each and every part of the body ultimately gets blood. Okay. Now whatever blood is used by the body, okay, that ultimately returns back to the right atrium and then the right ventricle. देखिए now ये खून में ऑक्सीजन कम है क्योंकि ऑक्सीजन is taken out, carbon dioxide is thrown. So now the blood which is rich in carbon dioxide, less of oxygen, is pumped by the right ventricle into the lungs called as pulmonary artery. Now that pulmonary is anything to do with the lung is pulmonary. So in the pulmonary artery, through the pulmonary artery, blood goes into the lungs. Lungs में carbon dioxide is thrown out, oxygen comes in, and now the blood which is rich in oxygen comes back to the left atrium, from there the left ventricle, aorta, and so on. So this is how the heart keeps on moving, pumping the blood, and blood keeps on moving. Therefore, it is called as blood circulation. So friends, this is how the heart keeps on moving. And see, heart cannot take rest, as I told you. It starts pumping right from the time we are in our mother's womb until we die. It keeps pumping. And how does it keep on pumping? उसको ताकत कहां से आती है पंप करते रहने का? फ्रेंड्स, उसके लिए हार्ट में कुछ इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है. It is a power station in the electric power station which gives electrical impulses to the heart. तो अपर चेंबर में पहले जाता है, बाद में लोअर चेंबर में जाता है. So there are electrical cables inside the heart. Please remember where I am talking of electrical supply, not the blood supply of the heart here. And electrically, each and every heart cell is stimulated, only then it pumps. अभी इसी बात पर मैं जब हूं तो आपको बताऊंगा कि कभी कभी इसमें भी कुछ बिगाड़ हो सकता है. कभी समझिए ऐसा है कि ये केबल खराब हो गया तो क्या हो जाएगा? Electricity will not go from the upper chamber to the lower chamber. And does it mean that it will stop pumping? No, because there is safety mechanism given. Each and every cell of the heart can also start its electricity, लेकिन वो sufficient नहीं होती है. तो पूरे ताकत के साथ नहीं होगा, लेकिन जरूर होगा. लेकिन ये जब होता है तो पेशेंट को क्या होता है, चक्कर जैसा होता है, आंखों में अंधेरा आता है, काम नहीं कर सकता है. और ये करके हम लोग देख सकते हैं कि भाई उसमें क्या है, तपास के देख सकते हैं. तपास कैसा करते हैं आप जानते हैं? इलेक्ट्रिकल तपास कैसे करते हैं आप सब जानते हो. ईसीजी करते हैं हम लोग. आप जानते हो ईसीजी आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो शरीर के ऊपर कई जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक वायर लगाते हैं और उसका रिकॉर्डिंग आ जाता है मशीन पे. वो ऐसा दिखता है और वो दिखता है और उससे हम लोग मालूम कराते हैं कि भाई कुछ इलेक्ट्रिकल गड़बड़ हार्ट में है क्या. ओके.
ये इलेक्ट्रिकल गड़बड़ सिर्फ मैंने जैसा कहा कि भाई पंप यहाँ कुछ केबल में तकलीफ होगा तो ही होगा, ऐसे नहीं, दूसरी भी बातें होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से फर्क पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो हमको मालूम पड़ सकता है कार्डियोग्राम से। तो अभी उस बात पर जब मैं आपको बता रहा था कि अगर कुछ ऐसा हो गया कि कुछ एक केबल में गड़बड़ है और इलेक्ट्रिसिटी जितनी चाहिए उतनी नहीं होती है, तो हम इलाज कैसा करते हैं आप जानते हैं? हम इलेक्ट्रिकल मशीन लगाते हैं, उसे कहते हैं पेस मेकर। पेस मेकर मतलब एक बैटरी ऑपरेटेड मशीन होता है दैट गिव्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर्टिफिशियली। अभी इस पिक्चर में इतना बड़ा दिखता है, उतना तो होता नहीं है, वो होता है इस तरह से। समझिए कोई पेशेंट है जिसको पेस मेकर लगाया है, तो पेस मेकर इस साइज का होता है, उसमें से जो वायर होती है वो वायर दिल के अंदर जाती है, एंड एक वायर अपर वाले खाने में चेंबर में, एक लोअर वाले में, एंड देन वी कैन स्टिमुलेट द हार्ट। Screen is stopped again, sir. Oh, I don't know why that is happening. From my side, it is still showing. Somebody, I think, must have tried to click something, and I think it stopped your sharing. Somebody, there is no Miss one. Maya, please don't try sharing your screen. Somebody Yes, tried ma'am. sharing Sir, it. sir, share again, sir, please. Now I'll have to stop sharing again. Huh? Honey, minimize Yeah. and show. Huh? Requesting everyone not to touch the share screen, that symbol which is there, the square which is there at the bottom. If somebody else clicks on that, then there would be problem. Then his sharing will get stopped. So we can see it now. Now can you see? Yes, sir. Yes. Okay. So if pacemaker is used, now you come across any individual who has got a pacemaker, you will see something like this. I'll show you. Like this. ये सिर्फ एक ऐसा दिखेगा कि कुछ यहाँ पे है. There is some elevation on the chest and nothing else will be visible. And if you see a patient's X-ray, it will be something like this. X-ray में ये pacemaker ऐसा दिखाई देगा, and you will see that यहाँ pacemaker दिखाई देगा. So that is one abnormality that we have already discussed about heart. But whenever we talk about heart disease, friends, heart disease, whenever we talk of heart disease, everybody thinks of only one, heart attack. क्या लेकिन heart attack अकेली बीमारी है heart की? It is not so. See, whenever बच्चा शरीर माँ की शरीर में कोख में पैदा हो रहा है, माँ की शरीर में वो पैदा हो रहा है, उसका शरीर बन रहा है, वो बनते बनते पूरा शरीर बनता है, आंख बन रही है, कान बन रहे हैं, हाथ बन रहे हैं, पांव बन रहे हैं, और तभी यहाँ पे दिल भी बन रहा है. तो कभी कभी कुदरत से कुछ गलतियां हो जाती है, और ये बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ हार्ट में थोड़ी गड़बड़ होती है. तो जो कुछ होता है, तो बच्चा इज बॉर्न विद एब्नॉर्मल हार्ट. So whatever heart disease is there since birth is called as congenital heart disease. Congenital means जो कुछ पैदाइशी है उसे कहा जाता है congenital. तो वो generally it's a structural abnormality. Simplest one of them is, I told you, heart should be tilting to the left. कभी-कभी right में होता है तो it is called as dextrocardia. Holes in the heart, abnormal connections, blue baby, ऐसे सब बीमारियां हो सकती है. I'll show you example. For example, यहाँ पे दो नीचे वाले चेंबर के बीच में छेद है, होल है. So this is one kind of hole abnormality. Other type upper chamber में भी हो सकती है. These are holes in the heart. कभी कभी कोई कॉम्प्लेक्स बीमारी होती है, होल तो होता है, एडिशनली सम, एक यहाँ पे देखिए राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन एंड सो ऑन. सो ऐसे एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है. एंड देन द बेबी में भी ब्लू, बॉर्न एज अ ब्लू बेबी, तो ऐसे लिप्स ब्लू दिख सकते हैं, फिंगर्स ब्लू दिख सकते हैं, एंड सो ऑन. सो फ्रेंड्स, दिस कैन बी कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज प्रॉब्लम्स. Congenital heart disease patients can be additionally having some other abnormality. For example, something like this, like 5 की जगह पे 6 उंगलियां हैं. यहाँ पे देखिए, this is something called as cleft lip. लिप बना नहीं है, यानी होंठ बराबर बना नहीं है, कुछ हाथ पांव बराबर बने नहीं. But it is not essential that all the babies with congenital heart disease have to have some external abnormality. And every baby with external abnormality may or may not have heart disease. वो तो तपासने के बाद ही मालूम पड़ता है. So friends, this is one abnormality which I told you. Another type of abnormality is, the heart में structure बताया, there are chambers of the heart I told you, but between the chambers
there are valves. Now these are valves. Valves क्या होते हैं? Valve छोटे छोटे दरवाजे होते हैं. पंप है तो उसमें वाल्व तो होगा ना, कि ब्लड का डायरेक्शन एक ही हो, यानी when blood should come from say upper chamber to the lower chamber only, but lower chamber जब पंप करेगा तो it should not go back to the upper chamber. उसके लिए वाल्व्स होते हैं. तो कभी कभी वाल्व की बीमारी हो जाती है. वाल्व की बीमारी कोई भी उम्र में होती है. कभी कभी उम्र बढ़ने के बाद आदमी बूढ़ा जैसा होता है, जब जैसे देखिए बाल झड़ जाते हैं या बाल सफेद होते हैं, उसी तरह से फर्क हो सकते हैं कि कभी कभी हार्ट के वाल में कभी कभी फर्क हो सकते हैं. वो एक होता है. लेकिन कभी कभी बच्चों के दिल में भी होता है. और बच्चों के दिल में क्या होता है, कभी कभी हवा से कोई कीटाणु आते हैं, एंड कीटाणु का असर पूरे शरीर में जो होता है कभी कभी हार्ट में हो सकता है. सो दैट इज कॉल्ड एज रूमेटिक हार्ट डिसीज. रूमेटिक मीन्स जॉइंट भी अफेक्टेड, हार्ट भी अफेक्टेड, तो इट इज कॉल्ड एज रूमेटिक हार्ट डिसीज. क्योंकि ये जो है ये इन्फेक्शन होता है गले में, विथ पर्टिकुलर जर्म होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम भूल जाइए. लेकिन वो जब होता है तो उसका असर, यानी बॉडी ट्राइज टू फाइट द इन्फेक्शन, एंड द इफेक्ट ऑफ द फाइट, नॉट द जर्म इटसेल्फ, effect of the fight can occur on joints, heart, skin, brain. If heart is affected, the valves can get affected. And valve क्या है? दरवाजे छोटे छोटे, मैंने आपको कहा. Valve can either get choked or valve can. पता था. Hello. Anything Sir, wrong it was there? by mistake. I think no, sir. I think it is somebody who's put on their mic by mistake. Okay, Please continue, sir. okay, Please continue, please. अच्छा. Please. तो ये डायग्नोसिस हो जाता है. हम तपासते हैं पेशेंट को. वी कैन मेक आउट व्हाट इट इज, और वी डू अ टेस्ट कॉल्ड एज एकोकार्डियोग्राम. एकोकार्डियोग्राम इज सोनोग्राफी ऑफ द हार्ट. उसमें दिल को देख सकते हैं, एंड वी कैन मेक द डायग्नोसिस. नाउ वेयर डज दिस हैपन? नाउ दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन, इजंट इट? सो वेरेवर दीज इन्फेक्शंस आर कॉमन, वहां पे हो सकता है. इसके लिए पॉवर्टी हो, देयर इज ओवर क्राउडिंग, पुअर हाइजीन, देयर दीज डिसीजेज आर कॉमन. So हमारे देश में वो ज्यादा है कॉमन. वी कैन स्टिल सी दिस रूमेटिक हार्ट डिसीज. आपको एग्जांपल बताता हूँ. इन दिस पिक्चर वी हैव शोन द 4 valves हियर. देखिए, जैसे दिस इज वन valve बिटवीन द लेफ्ट अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर. ये ऊपर के चेंबर निकाल के सिर्फ आपको दिखाया गया दैट व्हेन इट इज नॉर्मल इट शुड बी ओपनिंग दिस मच, बट इफ इट इज डिसीज, सपोज ओपनिंग बहुत छोटा हो गया, ये हो सकता है. नाउ व्हेन वी मेक डायग्नोसिस, एज आई टोल्ड यू, सी हियर the heart valve, this is the left up chamber, upper chamber, lower chamber. और ये जो valve है उसे खुलना था like this, लेकिन ये खुलता इतना ही है. So that is the valve disease, and we can see that in the echocardiogram. Here we can actually see the upper chamber, lower chamber, and this is the valve. Rather than opening so much, it is only opening so much that we can make diagnosis. Similarly, if there is a leakage, for example, here this particular valve is leaking, that can be seen on echocardiogram, blood coming back here also. So this is another type of heart disease. Many of them require operations, operative corrections. Some of them require, changing the valve also. There is another type of disease where heart muscle becomes weak. Okay. And heart muscle can either become weak and therefore heart becomes dilated, large, and their pumping strength is gone down. It is called as dilated cardiomyopathy. Cardio yani heart, myo yani muscle, pathy is disease. And there is some other forms also. But now, there is sometimes heart itself is normal, but there are some coverings of the heart which are called as peri. Peri means surrounding, cardium. तो पेरिकार्डियम में जो कवरिंग होते हैं हार्ट के, उनकी बीमारी होती है. तो बीमारी होती है तो पेशेंट को बुखार आता है, दुखता है छाती में. We can make the diagnosis by ECG, X-ray, again echocardiogram. Causes are some infection like TB, viral infections, etc., etc. So again आपने पिक्चर में देखना है, ये अगर दिल है उसका बाहर जो कवरिंग है, सो कवरिंग का वो बीमारी होता है. एंड ये कभी कभी ऐसा होता है कवरिंग की भी 2 लेयर है. जैसे हम लोग समझे बनियान और शर्ट पहनते हैं, तो देयर आर 2 कवरिंग्स. तो कवरिंग के बीच में बीमारी होती है. इसके लिए कभी कभी इसमें पानी जम जाता है. अगर पानी जम जाता है तो ऐसा होता है कि आप इसका एक्सरे करो तो दिखने में हार्ट बड़ा दिखता है. एक्सरे ऐसा दिखता है. एक्चुअली तो पूरा एक्सरे में ये जो दिख रहा है पूरा हार्ट नहीं होता है. एक्चुअली हार्ट तो अंदर ऐसा छोटा होता है, बट ये जो बाहर का दिखता है पानी की वजह से बड़ा दिख सकता है. Now that diagnosis cannot be made on X-ray, but when we do echocardiogram, we see that okay, heart तो अंदर normal है या आजू बाजू में पानी है. So friends, these are various types of heart diseases that I am telling you. Now let's come to actually what is heart attack. I told you that heart is a pump, okay, and it is pumping blood all over the body. लेकिन ये जो पंप है, देखिए नीचे वाले चेंबर हम
Okay, this is pump all right, but this is not a pump like this. ये भी पेशियों का, it is also made up of live cells, and heart will also require blood for its own work. You will say, what do you mean by heart requires blood? There is blood inside the heart, so heart को जितना चाहिए ले सकता है. Friends, whatever blood is inside the heart cavity cannot be used by the heart. For example, you go to banks, right? Banks में आप देखते हो कि आप जाते हो तो यहाँ विंडो में कैशियर बैठे रहते, रोज के उनके हाथ से लाखों रुपए निकलते हैं, लेकिन वो अपने काम के लिए वो नहीं ले सकते ना, वो लोगों को ही देने होते. सो उनको अलग सैलरी मिलती है. सिमिलरली हार्ट फॉर इट्स ओन फंक्शन कैनॉट टेक ब्लड विच इज इनसाइड इट्स ओन कैविटी. उसके लिए उसको अलग से सैलरी मिलती है. When we look at the picture of the heart, there are some blood vessels seen on the top. ये ब्लड वेसल जो है दिखती हैं, वो हार्ट को ही खून पहुंचाती है. सिंपल डायग्राम में बताऊंगा कि ये हार्ट ऐसा है, उसमें से जो एओर्टा यानी महाधमनी निकलती है, उसकी पहली 2 शाखाएं हैं, वो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई देती है. उनका नाम करोनरी आर्टरी होता है. सो एक बाईं तरफ जाती है, सो इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट करोनरी. एक राइट में जाती है, इट इज कॉल्ड एज राइट करोनरी. फिर दे ब्रांच एंड सब ब्रांच एंड सब ब्रांच, सो ईच एंड एवरी सेल ऑफ द हार्ट विल गेट इनफ ब्लड. व्हेन वी आर बोर्न, we have got new pipeline like चकाचक arteries. लेकिन बाद में समझिए उसमें कुछ प्लाक हो जाते हैं, ब्लॉक अंदर से होने लगते हैं, तो फिर ये नसें अंदर से छोटी छोटी होने लगती हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ समझिए ऐसा है, ये नस आ रही है और ये नस के अंदर में कुछ कचरा जम रहा है इस तरह से, तो वो नसों में ब्लॉक पैदा होने की शुरुआत होती है. अगेन इसमें दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल आर्टरी है, पूरी जब खोल की दिखाई गई है, अंदर से अच्छी तरह से ऐसी होती है, तो जितना खून यहाँ से आना है यहाँ आगे जाता है. फिर वो कभी कभी कचरा जमने लगता है, उम्र के हिसाब से थोड़ा होता है, कुछ बीमारियों की वजह से होता है, कुछ हमारी बुरी आदतों से होता है. एंड देन ये होता है तो नस अंदर से छोटी छोटी होती है, और उसके साथ अगर साथ में कोई खून की गांठ जम जाए तो फिर क्या हो जाएगा, नस पूरी बंद हो जाएगी, फिर यहाँ से आगे कोई भी खून जाएगा ही नहीं. और जब ऐसा हो जाता है कि कोई नस पूरी बंद हो जाती है और फिर वो हिस्से को बिल्कुल खून नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा, दैट पार्ट ऑफ द हार्ट विल स्टार्ट गेटिंग डैमेज. देखिए ये जो नस है, सपोज देयर इज दिस ब्लॉक इनसाइड लाइक दिस, सो दिस पार्ट ऑफ द हार्ट विल नॉट गेट ब्लड एट ऑल. और जो ब्लड बिल्कुल ना मिलने से डैमेज होने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक. ओके, अगेन सिंपल डायग्राम में आपको दिखाऊं, ये नस है और यहाँ पे ये ब्लॉक है, तो अगर ये पूरी तरह से बंद हो गया तो this part of the heart will get affected by the heart attack. Heart attack in medical terms is called as infarction, short में infarct कहते हैं. तो कहाँ पे infarct होगा और उसका कितना बड़ा infarction होगा यानी heart attack होगा, ये किस पर है, किस पर निर्भर है, जहाँ पे ब्लॉक है. समझिए ब्लॉक यहाँ पे है तो इतना ही हो गया, लेकिन अगर ब्लॉक यहाँ पे होता तो इतना पूरा हिस्सा अटैक में डैमेज हो सकता था. अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो उसे कैसे मालूम पड़ता है, उसे सीने में दर्द होता है, बीचों बीच छाती में दर्द होता है. ओके, यहाँ पे समझिए होता है. तो आपको बताना जरूरी है कि सिर्फ वहां पे नहीं होता है, सीने में बीच में हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है. वो दर्द कंधे में जाता है, कभी कभी इट कम्स टू द आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट अप टू द फिंगर. इट कैन गो टू द थ्रोट, कभी ऐसा लगता है गला कोई दबा रहा है. इट कैन गो टू द जॉ, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं मेरा जबड़ा दुख रहा है. इट कैन बी देयर इन द बैक, इट कैन बी इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन. बहुत लोग तो सोचते हैं गैस हो गया, बहुत आपका दिल अपनी जगह पे भी है, लेफ्ट में है, लेकिन ये पेन राइट में भी हो सकता है. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो इज बिकॉज वी हैव सीन इंडिविजुअल्स who have got heart attack, they have got chest pain, but because it is on the right side, they don't go to the doctor saying, अरे मेरा दिल तो लेफ्ट में है, पेन तो राइट में है, so it cannot be heart attack. Friends, ऐसा जरूरी नहीं है. So any discomfort from the jaw to the umbilicus, यानी अपनी नाभि तक, ये हिस्से में कहीं दर्द हो रहा है तो एटलीस्ट चेकअप होना जरूरी है. मैं नहीं कहता हूं कि ये सिर्फ हार्ट अटैक ही होगा, बाकी बातें भी हो सकते हैं, क्योंकि यही हिस्से में बाकी चीजें हैं. हमारा स्टमक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, मैं मानता हूं वहां का भी दर्द हो सकता है. सीने में फेफड़े हैं, फेफड़ों का कवर है, विंड पाइप्स हैं, फूड पाइप है. देयर कैन बी एनी कॉज, बट द पेशेंट डजंट कम टू नो. तो इसके लिए चेकअप करके देखना बहुत जरूरी होता है. दर्द के साथ कभी कभी बाकी कुछ चीजें होती है, जैसा पसीना होता है. लेकिन दोस्तों
ये जरूरी नहीं कि एवरी टाइम यू मस्ट गेट एवरीथिंग, बिकॉज देयर आर अगेन सम पेशेंट्स आई सीन दे गॉट चेस्ट पेन बट बिकॉज देयर वाज नो स्वेटिंग, पसीना नहीं आया, तो दे डोंट गो टू डॉक्टर सेइंग अरे हार्ट अटैक में पसीना आता है, हमको नहीं हुआ। तो इसके लिए कोई भी इस तरह का तकलीफ हुआ है, पेशेंट ने क्या करना है, गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। फिर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी लेने में टाइम नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि देखिए अगर वो हार्ट अटैक है तो एक नस कोई पूरी बंद है, उसको जितना जल्दी खोला जाए अटैक में डैमेज विल बी रिड्यूस्ड, एंड देयरफॉर द अर्ली ट्रीटमेंट इज एसेंशियल। गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। हाउ डज द डॉक्टर कम टू नो? He does cardiogram, and in the cardiogram most frequently immediately you come to know that this is heart attack. What do I mean by immediately you come to know? In most of the time, कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट अटैक में शुरुआत में कार्डियोग्राम कैन बी नॉर्मल, बट डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई आपका कार्डियोग्राम नॉर्मल है, फिर भी आप ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रहो। पेशेंट को लगता है डॉक्टर ऐसा है मेरे को पैसे के लिए एडमिट कर रहा है, खुद ही बोलता है ईसीजी नॉर्मल तो एडमिट क्यों कर रहा है, क्योंकि कभी कभी ईसीजी चेंजेस कैन कम लिटिल लेटर, सो डॉक्टर्स विल कीप चेकिंग ईसीजी अगेन एंड अगेन। वी डू सम ब्लड टेस्ट ऑल्सो। ब्लड टेस्ट में मालूम पड़ता है, क्योंकि हार्ट अटैक में जो हिस्सा डैमेज हुआ है उसके सब केमिकल्स खून में आ जाते हैं, तो खून में देख के पता चल सकता है कि भाई हार्ट अटैक है कि नहीं। हम लोग दोबारा जो हार्ट की सोनोग्राफी, एकोकार्डियोग्राफी वो भी करके देख सकते हैं, कि देखते हैं कि भाई दिल का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है, ऐसा दिख रहा है क्या। अगर है तो जल्द से जल्द उसका इलाज करना चाहिए। यानी कि अगर नस कोई है उसके अंदर पूरा ब्लॉक हो गया है, कोई गांठ जम गई है, ब्लॉक तो है और उसके ऊपर गांठ जम गई है, तो जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए। तो पूरी की पूरी नस खोलनी चाहिए, या तो कम से कम खून की गांठ निकालनी चाहिए। और सभी अस्पतालों में ऐसी दवा तो जरूर मिल सकती है कि खून की गांठ जो होती है उसको पिघलाने वाली इंजेक्शन जरूर होती है, सो वी कैन गेट द ट्रीटमेंट एज क्विकली एज पॉसिबल, एंड देन द फर्दर डैमेज टू दिस पार्ट ऑफ द हार्ट विल बी प्रिवेंटेड। तो आपका सवाल यहाँ पे ऐसा होगा कि ठीक है भाई, पूरी नस जब बंद हो जाएगी तभी हार्ट अटैक आएगा, लेकिन जब पूरी नहीं है, अंदर से ब्लॉक जरूर है लेकिन खून तो जा रहा है, अगर तभी हमको मालूम पड़े तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। तभी मालूम पड़ सकता है क्या? मालूम पड़ता है दोस्तों। क्या होता है, दिस पेशेंट ऐसा होता है कि खून पूरी तरह से बंद नहीं पड़ा तो अटैक नहीं आया, कोई हिस्सा डैमेज तो नहीं होगा, लेकिन whenever heart requires more blood cannot come across the blocked vessel. Okay, यानी कि वो आदमी बैठा है तो जितना खून आ रहा है उतना काफी होगा, बट सपोज वो he starts walking, running, climbing staircases, अभी दिल का काम बढ़ गया, दिल का काम बढ़ गया तो ज्यादा खून चाहिए, नहीं आया तो उसे तकलीफ होती है। उसी जात की तकलीफ जैसे हार्ट अटैक में होती है कि भाई छाती में दर्द हो गया, भारीपन हो गया, ऐसे होता है तो आदमी रुक जाता है, रुक जाता है तो थोड़ी देर में दर्द गायब होता है। गायब क्यों होता है? क्योंकि दिल का काम धीरे धीरे कम हो गया, तो जितना खून आ रहा है उतना काफी है। पेशेंट थिंक्स अरे आई वाज ऐसे ही डर गया मैं, कोई जरूरत नहीं था डरने का, कुछ नहीं है, एंड देन वो जल्दी जल्दी नहीं चला तो उसे दोबारा नहीं होता है तो खुश हो जाता है, लेकिन ये भी हार्ट का हो सकता है। उसका डायग्नोसिस डॉक्टर कैसे करते हैं? एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज नॉट हार्ट अटैक, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अंजाइना। आपने नाम सुना होगा अंजाइना, यानी ANGINA। अंजाइना में, अंजाइना का मतलब ग्रीक में होता है दर्द, और अंजाइना पेक्टोरिस इज द फुल नेम। अंजाइना यानी कि दर्द, और वो छाती में पेक्टोरल पार्ट होता है जो जहां पे दर्द होता है उसे कहते हैं अंजाइना पेक्टोरिस। ये डायग्नोसिस डॉक्टर कैसे करते हैं? वो तपास लेते हैं तो बोलते हैं अरे ईसीजी तो अच्छा है, लेकिन ईसीजी तो सोते सोते किया जाता है, पेशेंट को सुला के किया जाता है, वो तो अच्छा ही आएगा। तो क्या करना चाहिए? जब पेशेंट चल रहा है तभी जो हम लोग कार्डियोग्राम करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रेस टेस्ट। वो स्ट्रेस टेस्ट करके पता चल सकता है कि भाई चलते चलते अगर उसको दर्द हो गया है छाती में, और तभी यहाँ कार्डियोग्राम देखा गया, उसमें पता चला कि अरे भाई फेरफार आ रहे, और रोकने के बाद अच्छा हो गया, तो समझ सकते अंजाइना है। जैसे हार्ट अटैक में कभी कभी कार्डियोग्राम नॉर्मल होता है, तो वैसे यहाँ पे भी तो हो सकता है कि अंजाइना होने के बावजूद ईसीजी नॉर्मल हो सकता है। तो अगर शक ज्यादा है तो हम लोग यही टेस्ट को बढ़ा के करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज थैलियम टेस्ट। थैलियम टेस्ट में होता है कि सिर्फ ईसीजी नहीं देखा जाता है, इंजेक्शन देके हार्ट का पिक्चर लिया जाता है। और देखिए ये, अब देखिए यहाँ ये देख रहे हैं हार्ट का सेक्शन है, मेदुवाड़ा ये देख रहे हैं, ये एट रेस्ट है, एंड नॉन एक्सरसाइज अगर आपको लगता है अरे ये मेदुवाड़ा किसी ने खा लिया, तो दैट मींस ये हिस्से को खून नहीं मिल रहा है, तो पता चलता है पक्का कि भाई ये अंजाइना हो रहा है। अभी हार्ट अटैक हो या अंजाइना, तकलीफ क्या है? नसों में ब्लॉक है। नसों में ब्लॉक कैसा देखा जाता है आप जानते हो?
हम लोग करते हैं करोनरी एंजियोग्राफी। मैंने आपको बताया था कि करोनरी इज द नेम ऑफ द आर्टरी गोइंग टू द हार्ट, सो टेकिंग पिक्चर ऑफ द हार्ट आर्टरीज इज कॉल्ड एज करोनरी एंजियोग्राफी। ये एक्सरे टेबल होता है, ऑन द एक्सरे टेबल पेशेंट लाइज डाउन हियर एंड उसके नस में डायरेक्टली हम नली डाल के कुछ डाया डालते हैं एंड ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द करोनरी आर्टरी। फॉर एग्जांपल इट इज लाइक दिस। फिर ऐसे देखते हैं कि भाई ये लेफ्ट नस है, ये हमारी डाली हुई नली है एंड डाय जब उसमें से आता है तो यू कैन सी द ब्लड वेसल, उसकी सब ब्रांचेस देखते हैं और आपको लगा रहे यहाँ पे टूटी है क्या नस, ये ब्लॉक मतलब ऐसा दिख सकता है। यह देखिए दूसरा एक पिक्चर, ये राइट वाली नस है, यहाँ अंदर से बहुत कम हो गई है तो इस तरह से देख सकते हैं कि भाई ये ब्लॉक हुआ है। आफ्टर नोइंग अबाउट द ब्लॉक्स, डिपेंडिंग ऑन कैसे ब्लॉक है, कितने हिस्से को तकलीफ है, वी मे आइदर कंटिन्यू ओनली ड्रग्स, ओनली मेडिसिन, या कभी कभी वो ब्लॉक्स खोलने की सलाह दी जाती है। तो इट इज डन बाय एंजियोप्लास्टी। एंजियो यानी ब्लड वेसल, प्लास्टी यानी उसको रिपेयर करना। तो नस के अंदर कोई फुगा डाल के, फुगे को फुला के ब्लॉक को बाजू हटाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ बताऊं कि ये नस थी जहां पे ब्लॉक था, ये ऐसे ब्लॉक है, हमने एक नली डाली, नली के एंड में जो फुगा था उसको फुला के ब्लॉक को खोल दिया और इस तरह से नस खोली गई। दोस्तों ये नस खोलने का जो एंजियोप्लास्टी है दुनिया में चालू गए 1977 में, 1977। दिस वाज द मैन हु फर्स्ट डिड इट। ये उसने जो ट्यूब वापरी थी, ये बलून वाली, ये थी। और उसने जो पहले पेशेंट किया था उसका ऐसा था कि देखिए नस में ऐसा छोटी हो गई थी यहाँ पे नस, और वो बाद में इस तरह से खुली गई। और ये पिक्चर तो एंजियोप्लास्टी होने के 10 साल बाद लिया था, तभी भी वो खुली थी। इस तरह से एंजियोप्लास्टी से नस खोलते हैं। अभी एंड्रिया ग्रुंजिक ने किया तो हम सब लोग करने लगे, और जैसे जैसे ज्यादा लोगों का करने लगे वी केम टू नो दैट ओके, पाइपलाइन का जो कीचड़ बाजू में आपने हटा दिया तो बाजू में रहता है, लेकिन हमारी ब्लड वेसल जो है दे आर नॉट मेटालिक वेसल्स, वो तो दोबारा छोटी हो सकती है। तो छोटी दोबारा ना हो, या हमने बलून से खोली है तो दोबारा ना हो, उसके लिए वहां पे स्प्रिंग जैसा रखते हैं, दिस इज कॉल्ड ए स्टेंट। तो स्टेंट लगा के ताकि यह नस दोबारा सिकुड़ ना जाए, दैट इज कॉल्ड ए स्टेंट। पिक्चर में स्टेंट ऐसा दिखा है बट एक्चुअली इट लुक्स लाइक दिस। द लेंथ ऑफ द स्टेंट एंड द विड्थ ऑफ द स्टेंट इज डिसाइडेड बाय द डॉक्टर हु इज डूइंग द प्रोसीजर, क्योंकि वो नस देखता है जो पर्दे के ऊपर देखता है, उसके मुताबिक उसका सिलेक्शन किया जाता है। देखिए ये नस ऐसी है जहां पे कम हो गई थी, स्टेंट लगाने के बाद इस तरह से बड़ी हो गई, तो ये एंजियोप्लास्टी होती है। दोस्तों एंजियोप्लास्टी करते ठीक है, लेकिन कभी कभी ब्लॉक बहुत ज्यादा होते हैं, ब्लॉक ऐसे जगह पे होते हैं जहां पे स्टेंट लगाया नहीं जा सकता है, फिर हम लोग बाईपास सर्जरी की सलाह देते हैं। बाईपास सर्जरी क्या होती है, देखिए ये नस है, यहाँ पे छोटी हो गई है, दूसरी यहाँ पे छोटी हो गई, अंदर से ऐसी छोटी हो गई है, और वहां पे समझे एंजियोप्लास्टी नहीं की जा सकती है, तो ब्लॉक के आगे खून कम जा रहा है, उसके लिए नया नस जोड़ देना और ब्लॉक के आगे जाना, इसी को कहते हैं बाईपास सर्जरी। लेकिन ये तो ऑपरेशन होता है, उसमें छाती हनुमान जैसा खोलना पड़ता है, ब्लॉक को जहां है एंजियोग्राफी में देखा है उसके आगे नया नस जोड़ देते, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, वगैरह वगैरह। So friends, in short, so far I told you what is heart, okay, what are various types of heart diseases and all. But now when we are talking of this heart disease, our question is, हम लोग कुछ कर सकते हैं कि नहीं? ये तो आपने बताया कि डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, अरे हमने क्या करना है? We can do this if we know why it occurs. And friends, as was discussed earlier in the introduction also, it is one of the lifestyle diseases. What is the meaning of lifestyle disease? Wherever, because the way we are living, because of that, some abnormalities keep coming. That is, we are getting more and more urbanized, more and more industrialized, and with that, our lifestyle is changing. And with that changed lifestyle, certain diseases come. They are called as lifestyle diseases. And which are they? You know, there are many. Like for example, कोई जात की अस्थमा होता है, जैसे हम लोग कहते हैं पॉल्यूशन ज्यादा है, अस्थमा हो जाता है। समझो सिगरेट पीने वाले को लंग का कैंसर हो सकता है, ओके, इजंट इट? लीवर डिसीज, दारू पीता है तो लीवर खराब होता है, और सिगरेट पीने वाले को लंग का दूसरा बीमारी भी हो सकता है, खाने पीने के ढंग से डायबिटीज ज्यादा हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसी तरह से जैसा जैसा अपना लाइफस्टाइल बदल रहा है, सो देयर आर मोर एंड मोर डिसीजेस। व्हाट इज टुडेज लाइफस्टाइल? देखिए, नो एंटरटेनमेंट, सोशल लाइफ नहीं है, वी आर नॉट डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज, our eating habits are not regular, we are not having proper sleep, time is getting converted into money. Okay, खुद को देखना ये backseat लेता है, and we are looking after, you know, corporate interest and personal ambitions,
And the reason because of that, all this is all this lifestyle disease or affluent society disease. हमारी लाइफस्टाइल पहले क्या थी? भारत में हम लोग पहले ऐसे थे, isn't it? We used to work like that. And what are we today? Today we are this. हम लोग क्या खाते हैं? ये खाते हैं या ये खाते हैं, और जैसे दूसरे उसके साथ साथ बाकी हमारी आदतें बिगड़ गई. हम लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको का वापर करते हैं. अच्छा, जरा टाइम मिले भी तो हम लोग क्या करते हैं, चलो मॉल्स में जाओ. गाड़ियां हमारी छोटी और सस्ती हो रही है तो हम लोग गाड़ियों से ज्यादा जाते हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है तो हमको चलना फिरना नहीं होता है. और हमारे काम की जगह पे हम लोग रैट रेस में हैं, भागो भागो भागो, आगे चलो, आगे आगे चलो. ये सब का रिजल्ट क्या हो जाता है? ये बीमारियां यानी या मैंने ये पिक्चर बताया है. देखिए, क्योंकि अच्छा खाने पीने का ढंग नहीं है, व्यायाम नहीं है, अपना लाइफ खराब है, सबसे हो जाती है, ये हो जाता है. ओके, और देखिए हम लोग जो करते हैं, हमारे बच्चे भी वैसे करते हैं. अभी मैं प्लेइंग लाइक दिस नाउ, अर्लियर आई यूज्ड टू सी देम लाइक दैट. ओके, अभी जो बच्चों को टाइम मिला थे प्ले लाइक दैट, उनको और टाइम मिला पढ़ाइयों से उनके, तो ये लोग टीवी देखते हैं, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो भी ऐसे ही देखते हैं. विद दैट द रिजल्ट इज चाइल्डहुड ओबेसिटी आल्सो. बचपन से हम लोग आदत डालते हैं एंड दीज चिल्ड्रन स्टार्ट हैविंग ओबेसिटी. अर्लियर इट वाज कंसीडर्ड दैट हार्ट डिसीज इज ओनली अ डिसीज ऑफ एजिंग. अभी ये बात सच भी है. जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी नसें यानी पाइपलाइन पुराने होने लगती है, तो उसके अंदर से ब्लॉक होने की शुरुआत जरूर हो सकती है. बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन. आपने जरूर कोई देखा होगा कि 25-30 के साल में भी उम्र में भी किसी को हार्ट अटैक आ गया, आपने सुना होगा. एंड आपने ये भी देखा होगा सम पीपल लिव अप टू द एज ऑफ 80-90 विदाउट एनी हार्ट अटैक. सो दैट्स नॉट द ओनली डिसीज, दैट्स नॉट द ओनली कॉज ऑफ हार्ट अटैक. व्हाट आर अदर कॉजेज? ये सब जो कॉजेज है हम उन्हें रिस्क फैक्टर कहते हैं. व्हाट आर अदर रिस्क फैक्टर्स? देखिए, यू मस्ट हैव सीन दैट मेन गेट मोर हार्ट अटैक्स देन वीमेन. आपने देखा होगा, यानी मर्दों में हार्ट अटैक ज्यादा दिखे जाते औरतों से. और हम लोग हमेशा सोचते भाई ऐसा क्या हो गया, हम एक ही भगवान के सब वीमेन कि उनको हार्ट अटैक कम क्यों, मेन को ज्यादा क्यों? और फिर कभी कभी लोग अलग अलग सोचते, बोलते मेन स्मोकिंग ज्यादा करते हैं इसके लिए वगैरह. लेकिन वो बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ. मेन गेट मोर अटैक्स देन वीमेन. अभी ये क्यों होता है? लेट मी टेल यू हियर दैट गॉड्स आर नॉट पार्शियल टू वीमेन. गॉड कैन नॉट बी पार्शियल. गॉड इज इक्वल टू ऑल. ओके, स्टिल वीमेन गेट लेस हार्ट अटैक्स. क्यों? देखिए, आपने देखा होगा गॉड्स आर नॉट पार्शियल, ओके, बट गॉड इज ऑलवेज काइंड टू अनबॉर्न लाइफ. एक कोई पौधा है समझिए, ओके, पौधा है, आपको पौधा जो बनना है किससे बनता है? बीज से, सीड से पौधा बनता है. एंड वेयर इज द सीड लोकेटेड? इनसाइड द फ्रूट, इनफैक्ट वेरी फ्रीक्वेंटली इनसाइड अ रिजिड शेल. ये जो बीज है, जो पेड़ का बीज भी है, उसे प्रोटेक्शन दिया गया है कि वो पंछी ना खा डाले. आम देखिए, आम का जो है गुठली जो है उसके अंदर है बीज, वो जमीन में ही जाना है, उसमें से नया पेड़ ही आना है, वो नहीं खाई जानी चाहिए. तो उसी तरह से इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट एंड शी हैज अ बेबी इन द वूम, अगर उसको हार्ट अटैक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो बचने के लिए द वुमन इज गिवन दैट प्रोटेक्शन. एज लॉन्ग एज शी हैज द एबिलिटी ऑफ हैविंग बेबी इन हर वूम, शी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्ट अटैक. यानी कि जो हार्मोन, विच एवर हार्मोन गिव्स हर मंथली पीरियड, द सेम हार्मोन कीप्स द ब्लड वेसल्स क्लीन, उनको ब्लॉक नहीं होने देता. आफ्टर दैट एज, दैट इज आफ्टर द एज ऑफ मेनोपॉज, मेन एंड वीमेन आर इक्वल, तब तक नहीं. ओके, तो दोस्तों वी आर डिस्कसिंग रिस्क फैक्टर्स ऑफ द हार्ट डिसीज, एडवांसिंग एज, योर जेंडर मेन और वीमेन, और क्या है सम हेरिडिटरी फैक्टर्स. आपको माता पिता से पैसा मिलता है, जेवर मिलते हैं, घर मिलता है, और कुछ मिलता है, स्टेट मिलती है. वैसे अगर बीमारियों का जीन मिलता है कि भाई तुम्हें ब्लड प्रेशर का जीन ले लो, डायबिटीज का ले लो, सो ये जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से बीमारी होती है. दोस्तों, विच 3 फैक्टर्स आई टोल्ड यू सो फार? एडवांसिंग एज, देन योर जेंडर एंड जेनेटिक फैक्टर्स. वो जान के भी हम लोग करेंगे क्या? हम चेंज नहीं कर सकते. मेरी उम्र अगर बढ़ती है तो बढ़ती है, अगर बाल मेरे सफेद होते मैं बाहर से काले जरूर रंग लगा के करूंगा, बट नथिंग विल चेंज इनसाइड. Therefore, it is more important to know what are the modifiable factors. उनमें से एक है ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर तो होना है भाई, नस में ब्लड जा रहा है, नस के अंदर प्रेशर तो होना ही है.
लेकिन दोस्तों ये अगर ज्यादा हो गया तो फिर उससे तकलीफ हो सकती है। ज्यादा यानी कि नॉर्मल प्रेशर हम सभी में, जो हम लोग आपने हमेशा सुना होगा 120/80, या ज्यादा से ज्यादा समझो 130 और 85 85 से कम है तो नॉर्मल प्रेशर है। लेकिन वो अगर बढ़ने लगा 140/90 के ऊपर होने लगा तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। बहुत ज्यादा हो गया 160-100 तो हम लोग कहते हैं एडवांस हो गया ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्यों होता है? देखिए, आप अगर 100 ब्लड प्रेशर के मरीज लाएंगे तो उसमें से आप देखेंगे किसको किडनी का बीमारी है, किसको कुछ थायराइड का बीमारी है, कुछ अंदर के ऑर्गन का बीमारी है, कुछ नस का बीमारी है, कुछ दवाइयों से, कभी कभी स्टीरॉइड से होता है, वगैरह वगैरह बीमारियां होती है। कभी कभी तो मैंने आपको बताना चाहिए कि आजकल ये ज्यादा महसूस हो गया है, इट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। बहुत सिंपल वर्ड में, इसके ऊपर मैं पूरी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन नींद में खर्राटे लेना, उसका मतलब क्या होता है? खर्राटे लेना, क्योंकि सांस की आवाज है नींद में आने वाली, तो नींद में आने वाली जो आवाज है तो क्यों आती है? हमारी सांस, अभी तो हम सभी सांस ले रहे हैं, और अगर सब जाग रहे हैं, कोई सोया नहीं है लेक्चर सुनते सुनते, तो देखिए खर्राटों की आवाज नहीं है। इसका मतलब ब्रीदिंग में ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गया तो आवाज आती है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रुकावट आ रही है, तो वो ताकत लेके मनुष्य आदमी ले तो लेता है सांस, लेकिन नींद में ताकत लगाना पड़े, मतलब नींद आराम से नहीं हो सकती, आराम नहीं होता है, ताकत लगानी पड़े तो एक जात का एक्सरसाइज हो गया, तो प्रेशर बढ़ने लगता है। तो वो बेचारा आदमी नींद में ही प्रेशर डाउन होने से बदले वो बढ़ता है, सो ही वेक्स अप विथ आल्सो हाई ब्लड प्रेशर। ये एक कारण इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी 100 में से 90 लोगों में करीब आपको कोई इसमें से कारण मिलेगा ही नहीं। वो ब्लड प्रेशर बढ़ना एक ही एब्नॉर्मलिटी होती है, दूसरी कुछ होती नहीं है, और हमारे देश में काफी कॉमन है। फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने से तकलीफ क्या होती है? तो आदमी को महसूस कुछ नहीं होता है, बिल्कुल तकलीफ महसूस नहीं होती है। तो लोग कहते हैं अगर तकलीफ नहीं हो रही है तो उसे रहने दो ना, क्यों छेड़ने का, मेरा प्रेशर ऐसा ही रहता है। दोस्तों, अगर प्रेशर इसके अंदर ज्यादा है तो आप समझ सकते हो क्या होगा। वो बहते बहते वो जो बाजू की नस की दीवारें जो हैं उसको तकलीफ देने लगता है, ब्लॉक होने लगते हैं, वो चौड़ी होने लगती है, और कभी कभी अगर बाय चांस फूट गई चौड़ी होने से तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसके लिए ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन की तकलीफें हो सकती है, पैरालिसिस के अटैक आ सकते हैं, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, आंखें खराब हो सकते हैं, हार्ट में ज्यादा ब्लॉक हो सकते हैं, किडनी खराब हो सकती है। दोस्तों, इसके लिए ब्लड प्रेशर को काबू में रखना होता है, और काबू में रखने के लिए क्या होना चाहिए? वो चेकअप करते तभी मालूम होता है। तो ये रेगुलर ब्लड प्रेशर का चेकअप होना चाहिए। अगर दवाइयां बताई गई है तो दवाइयां करनी चाहिए। बहुत बार डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ा सा ही बड़ा है, दवा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जरा नमक थोड़ा सा कम करो, वजन कम करो, शराब मत पियो, एक्सरसाइज करो, उससे भी तो थोड़ी मात्रा में जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दैट कैन कम बैक टू नॉर्मल। ओके, एंड विथ ऑल दैट वी हैव टू मैनेज ब्लड प्रेशर वेल। व्हाट इज अदर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज? इज डायबिटीज। व्हाट द आइसबर्ग, व्हाट इज नोन इज हाई ब्लड शुगर। मुझे लगता है कि आपने एक पूरा टॉक डायबिटीज के ऊपर सुना है, तो मैं ज्यादा बात उसके ऊपर करूंगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताऊं कि डायबिटीज में हार्ट डिसीज इज वेरी कॉमन। नॉट ओनली हार्ट डिसीज, ऑल ब्लड वेसल्स, ब्रेन ब्लड वेसल्स, आंखों की ब्लड वेसल, हार्ट की ब्लड वेसल, किडनी की ब्लड वेसल। नॉट ओनली दैट, आपने सुना होगा डायबिटीज के टॉक में कि पांव के नसें कभी कभी खराब हो जाती है, पांव के गैंग्रीन भी हो सकते हैं। इसके लिए दोस्तों डायबिटीज को अच्छा रखना होता है। डायबिटीज बहुत अजीब बीमारी है। अगर कोई यंग लड़की है, उसे अगर डायबिटीज है, तो दोस्तों उसका जो नेचुरल प्रोटेक्शन है, जो उसके दिया गया है कि वो अगर उसका हार्मोन जो देते हैं, दैट प्रोटेक्शन इज गॉन, एंड देन मेन एंड वीमेन आर इक्वल हार्ट अटैक के मामले में। हार्ट अटैक के मामले में कभी कभी ये भी होता है कि डायबिटीज इज अ क्वाइट बीमारी, साइलेंट बीमारी होती है। वो कभी कभी हार्ट अटैक होते हैं, लेकिन जो टिपिकल दर्द महसूस होना है वो होता ही नहीं है। इसके लिए साइलेंट हार्ट अटैक कैन ऑकर इन डायबिटीज। और एक बात होती है, डायबिटीज में प्रेशर भी ज्यादा हो सकता है, और कभी कभी ये होता है कि लेटे हुए आदमी का प्रेशर आप चेक करो तो ठीक होता है या ज्यादा होता है, लेकिन खड़े होने पर लो हो सकता है, और फिर वो खड़े होने पर उसे चक्कर आती है। और अगर ये चेकअप आपने किया नहीं है तो ये महसूस मालूम नहीं होता है, तो ब्लड प्रेशर डायबिटीज के मरीज ने कभी कभी लेटे हुए और कभी कभी खड़े होते भी चेकअप करना है। सो वी आर डिस्कसिंग मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स फॉर द हार्ट डिसीज। व्हाट आर दे? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर देखा हमने, और क्या है? कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल यानी एक ऐसा केमिकल पदार्थ है जो खून में बह रहा है। अभी ऐसा नहीं समझिए कि कोलेस्ट्रॉल इज पॉइजन,
Please remember, cholesterol is not poison. Cholesterol is one of the most essential substances for the body. Covering of almost all the cells has got good amount of cholesterol. Our liver is full of cholesterol. Our brain is full of cholesterol. The hormones, women hormones and men hormones, they come from cholesterol. Not only that, some vitamins like vitamin D, for that cholesterol is required. So cholesterol is not poison, but if there is too much of cholesterol flowing in the blood, so while flowing, it can cause blocks inside the artery like that. So ये artery है, उसके अंदर block हो सकता है. Not only that, जहां जहां जगह मिलेगी वहां कोलेस्ट्रॉल बैठ जाता है. तो आपने किसी किसी की कभी आंखें देखी होंगी, आंखों के नीचे भी ऐसे छोटी छोटी गांठें देखी होंगी, plaques under the eyelids. They can be because of cholesterol. Okay. If you have seen anybody's cholesterol report, आपने देखा होगा something called as total cholesterol. तो total cholesterol हम सभी में 200 से कम होना चाहिए. आपके रिपोर्ट में it should be below 200. But it is not the only one. आपने देखा होगा रिपोर्ट में there is something called as LDL cholesterol, something called as HDL cholesterol. तो ये क्या है? LDL is bad cholesterol that causes the blocks. HDL is good cholesterol जो प्रोटेक्शन देता है हार्ट को. There is another fat called as triglyceride. वो कोलेस्ट्रॉल की इतनी जरूर खराब नहीं होती है, but that should also be kept below 200. अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल below 200 होना चाहिए. बुरा वाला हम सभी में, नॉर्मल्स में भी 130 से कम होना चाहिए. अगर 100 से नीचे है तो बहुत ही अच्छा है. अगर जिसको हार्ट अटैक पहले से ही था या डायबिटीज है, उसने पक्का उसको 70 के नीचे रखना है. और आजकल तो ये नंबर नीचे आ गए हमारे स्टडीज में, यानी इंडियन स्टडीज में ऐसा आया कि इसको 50 से नीचे रखे तो अच्छा है. और HDL जितना बढ़े उतना अच्छा है. ओके. ट्राइग्लिसराइड भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, 200, 300, 400 बढ़ने लगे तो दिल को तकलीफ देते हैं. एंड नॉट ओनली हार्ट बट इट कैन आल्सो अफेक्ट द पैनक्रियास. ओके. नाउ विल यू रिमेंबर व्हिच इज गुड एंड व्हिच इज बैड कोलेस्ट्रॉल? प्लीज रिमेंबर HDL कोलेस्ट्रॉल. H फॉर हिंदुस्तान. हिंदुस्तान कोलेस्ट्रॉल इज गुड, सो उसको बढ़ाना है. सो फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, और क्या रिस्क फैक्टर्स है? हमारा वजन. अगर हमारा वजन बहुत ज्यादा है, चर्बी बहुत ज्यादा है, तो हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है. सब पूछते हैं कि वजन कितना होना चाहिए. कभी कभी मुझे फोन आते हैं, मेरा उम्र 55 है, मेरा वजन कितना होना चाहिए? सो फ्रेंड्स, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द एज बट इट इज रिलेटेड टू द वेट, हाइट. तो हम लोग क्या देखते हैं, वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ योर हाइट इन मीटर्स. यानी समझिए मेरा वजन अगर 70 किलो है तो 70 और मेरा हाइट अगर 175 सेंटीमीटर, तो यानी 1.75 मीटर्स है, तो 70 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 1.75 इज माय बॉडी मास इंडेक्स. अगर 25 से कम है तो ठीक है, नॉर्मल है. 25 से 30 के बीच में तो हम लोग कहते हैं आप यू आर ओवरवेट, और 30 के ऊपर है तो यू बिकम ओबीज. अभी इतने सब नंबर आप कहेंगे हमें याद रखना नहीं, एक बताइए ना. तो इफ इट इज बिलो 23 इट इज गुड, ऐसा समझिए. ओके. अच्छा, व्हाट इज बैड अबाउट वेट? फॉर एग्जाम्पल देखिए, इनका तो बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा होगा, इनका भी ज्यादा होगा, है ना. अभी ये क्यों फॉरेनर्स की क्यों बात करें, अपने लोग देखिए, क्या इनका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा नहीं होगा? होगा कि नहीं ज्यादा? बिल्कुल होगा. लेकिन आपने देखा इन सभी पिक्चर में कॉमन क्या है? देखिए यहाँ पे देखिए. ओके. यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए. सो दोस्तों, व्हाट इज essential is we keep waist circumference also कम, क्योंकि यहां अगर वजन ज्यादा है हमारा तो वो सिर्फ चर्बी होती है, और शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी कैन कॉज प्रॉब्लम, नॉट जस्ट वेट. सो इफ इट इज वेट ऑफ मसल्स वो बुरा नहीं है, वेट ऑफ चर्बी एंड कमर के बाजू में जो वजन होता है इट इज ओनली फैट. सो आइडियली फॉर इंडियंस, इन मर्दों में वेस्ट सर्कमफ्रेंस शुड बी बिलो 90 सेंटीमीटर्स एंड इन वीमेन बिलो 80. तो सिर्फ बॉडी मास इंडेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बॉडी वेट, और क्या है जो रिस्क फैक्टर है? हमारा रोज का खाना. आप कहेंगे अभी वापस बात करने की क्या जरूरत है? अगर मेरा वेट सही है, अगर मुझे डायबिटीज नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कितना भी खा सकता हूँ. क्योंकि मैं अगर हमेशा ये खाता रहा हूँ तो मेरे शरीर में जो बहेगा तो कुछ ना कुछ ब्लॉक को शुरुआत कर देगा. व्हाट आर अदर रिस्क फैक्टर्स? बीइंग अ कोच पोटैटो, नॉट हैविंग फिजिकल एक्टिविटी. कोई ना कोई जात का एक्टिविटी हमेशा होना चाहिए. इफ इट इज नॉट देयर, सर्टेनली मोर ब्लॉक्स विल अपीयर. इनफैक्ट वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर 2 आदमी मेरे पास लाए,
कि एक भाई जरा थोड़ा सा मोटा है लेकिन वो बहुत एक्टिव है फिजिकली, दूसरा जरा है पतला जरूर लेकिन कुछ एक्टिविटी नहीं है, उसका मतलब वो पैदाइशी ऐसा पतला ही था. सो व्हाट इज बेटर इज थोड़ा वजन ज्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक्सरसाइज होना जरूरी है. व्हाट आर अदर रिस्क फैक्टर्स? स्मोकिंग. स्मोकिंग यानी दोस्तों देखिए सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग नहीं, इट कैन बी सिगरेट, बीड़ी, चिलम, cigar, pipe, chirut. Not only that, tobacco in any form, because many people of our country, they don't smoke. They chew tobacco, पान में डाल के खाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह. So tobacco in any form is bad because that can certainly cause more blocks. So much so that कोई young आदमी आ गया हमारे Sir, पास. your screen is again stopped, sir. Oh, Again, somebody has again done the Anand sharing. Panguji, please stop sharing. oh. Apurva? Anand Panguji, please stop sharing. You will have to minimize, come out, and then again share. Oh, Sorry, again. sir, for this disturbance. Yeah. Anand Pangu, sir, please stop sharing. Sir, are you able to share the screen? Yeah, Yes. I am doing that. Yes, sir, it's coming presently. See it. Okay. And some people may be thinking that वो share screen करके उनके पास वो picture copy हो सकता है, वैसा नहीं होता है ना. Sometimes I experienced that earlier also. अच्छा. Now, whenever we talk of smoking and tobacco, next obvious question is what about alcohol, isn't it? Right. What about alcohol? क्योंकि सभी ने कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा है कि small amount of alcohol is good for heart. Now, is that right? Is the question. Friends, let me tell you here why it was considered good. Because खास करके red wine में it was shown that some material ऐसा है कि जिसकी वजह से HDL अच्छा वाला हिंदुस्तान कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. It was also shown that some antioxidants are there. So because of that, they are helpful. So it was considered good. But all Indian studies have shown that alcohol is not protective in Indian patients. Not only that, because of alcohol, जैसे HDL कोलेस्ट्रॉल जरूर थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन वो थोड़ा सा ही बढ़ता है, समझिए 35 से 40 हो सकता है, बट ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, 150 से 400 हो सकते हैं. बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. इसके लिए दोस्तों हार्ट एक्चुअली अल्कोहल इज नॉट प्रोटेक्टिव फॉर द हार्ट फॉर all our Indian patients. Not only that, anybody taking alcohol regularly for months and years together, gradually pumping strength of the heart goes down. There is an entity called as alcoholic cardiomyopathy. इसके लिए it's from a cardiologist, it is certainly no for alcohol. Okay. Last but not the least, what is the risk factor for heart disease? And that is stress. टेंशन जिसको ज्यादा है, जैसे हम लोग जैसे शारीरिक काम हमारा कम हो गया, एक्सरसाइज इज लेस, बट मेंटल ज्यादा है. So with all that, with increased stress, we get more and more heart disease. So friends, in short, I have listed here the risk factors. Advancing age, gender, and hereditary are non-modifiable, but there are so many which can be modified. Blood pressure can be controlled, diabetes should be controlled, cholesterol, वजन कम कंट्रोल सकते हैं, डाइट को अच्छा रख सकते हैं, एक्सरसाइज को अच्छा रख सकते हैं, टोबैको बंद और स्ट्रेस मैनेज किया जा सकता है. एंड उसके लिए हमारे खाने पीने में सब्जियां वगैरह बहुत होनी चाहिए, फ्रूट होने चाहिए. अभी हम हमेशा ये बात करते हैं तो पीपल आर दैट मीन सिर्फ घास फूस खाना है क्या? व्हाट अबाउट नॉन वेज फूड? So I myself am a vegetarian, and like various schools say vegetarianism is good. I agree with that. But as a doctor, as a medical discussion, I must tell you that certain type of fish is actually good for heart. So उसमें not shellfish, यानी lobster and prawns वगैरह नहीं, but something like जो which is available here, जैसे पापलेट, सुरमई, बांगड़ा जैसे fish कम से कम तेल में आप पकाए, so it is actually to some extent good for the heart. Okay, so have good diet, have some exercise जो आप कर सकते हो. It may be brisk walk, it may be jogging, whatever you can do for your age and with your ability you should do. So any exercise where your body moves a lot, that is all good exercise. So any exercise heart will be most happy. जो आप करेंगे, साइकिलिंग करो, बैडमिंटन खेलो या एनी गेम खेलो,
दौड़ो, स्किपिंग करो, एवरीथिंग विल बी गुड. लोग पूछते कभी कभी नहीं, जैसा कोविड था घर के बाहर नहीं जा सकते थे, अभी बारिश होती तो हम नहीं जा सकते, तो समटाइम्स हम वी कैन डू सम इंडोर एक्सरसाइज आल्सो. It can be say stationary cycling, some other exercises. On YouTube there are programs like walk at home, etc. With exercise, I'll again and again say there are many benefits. Blood pressure के लिए benefit है, diabetes के लिए, cholesterol के लिए, heart disease के लिए, stroke यानी paralysis वगैरह के लिए, certain cancers के लिए है. So friends, exercise has to be there. Some people tell me, हाँ exercise करके मेरा बहुत अच्छा हो गया, मेरा वजन भी कम हो गया और मेरा पेट भी कम हो गया. Oh, very good. Some कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा पेट तो कम हो रहा है लेकिन मेरा वजन नहीं कम हो रहा है, मेरा बॉडी मास इंडेक्स अभी भी ज्यादा ही है. Some कहते हैं नहीं, मैंने एक्सरसाइज किया, मेरा पेट कम नहीं हुआ, बॉडी मास इंडेक्स भी कम नहीं हुआ, तो मेरा एक्सरसाइज यूजलेस है क्या? Friends, let me tell you here, exercise is not only for weight control. Exercise mainly, as a cardiologist I will tell you, is for cardiorespiratory fitness. And at cardiorespiratory fitness you will get whether or not your weight is coming down with exercise. Therefore, friends, even if I had to give only one message from today's talk, is be physically active, do some exercise regularly. And of course, no smoking, in fact, no tobacco in any form. Management of stress. I always say management of stress. You cannot remove the stress totally. That is, there will be a situation around you which will cause stress. You can't remove the situation. You can't change. Suppose I am going for some medical emergency. मेरा गाड़ी यहाँ कहाँ है? And I'm caught in the traffic jam. मैं क्या कर सकता हूँ? मैं हॉन्ग पी हॉर्न मारूंगा, गाड़ी से उतरूंगी, चिल्लाऊंगा, इससे कोई मेरा स्ट्रेस ये तो कम नहीं होगा, सिर्फ मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा. So I have to keep cool. I have to manage myself, isn't it? So it is always said that you cannot prevent birds of sorrow from flying over your head. अगर गम के पंछी आपके सर के आजू बाजू में मंडरा रहे तो आप उन्हें नहीं रोक सकते, but you can certainly stop them from building nests on your head. कम से कम ये तो देखो कि ये पंछी, गम के पंछी, आपके सर के ऊपर घोंसला ना करे. तो आपका सर आपके कंट्रोल में है, ये टेंशन वाली सिचुएशन जो बाजू की है वो नहीं. उसके लिए क्या जरूरत है? अच्छी नींद लेना, अच्छा फैमिली लाइफ, हैव गुड टाइम, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम करना, आपकी जो कोई हॉबीज हो, म्यूजिक हो या ड्राइंग हो, रीडिंग हो, कुछ भी हो, फोटोग्राफी हो, करते रहना. इट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल. एंड म्यूजिक में म्यूजिक सुनना भी हुआ तो भी अच्छा है, आप अगर खुद का म्यूजिक कर रहे हैं तो भी अच्छा है. ग्रुप एक्टिविटी, every group activity, you will see that it works mainly because it is a good stress buster. Okay, so friends, have good time. Like काम करते वक्त हम लोग जरूर गंभीरता से करते, we do all your work seriously, but it doesn't mean that we have to have long faces all the time. Do masti, maja, dhamal in life also. That certainly helps. Friends, it is known to medical science in several years. Like this is Gautam Buddha. What he had said that every human being is the author of his own health or disease. हम लोग खुद ही कर सकते हैं, तो हमने करना चाहिए. देखिए तभी से मालूम था. Hippocrates is considered as god of medicine. See, he was there before Christ also. What had he said several years back? That if we can guide an individual with right amount of exercise and proper nutrition, which is not too little and not too much, we would have found the safest way to health. मतलब अपना खाना पीना और एक्सरसाइज वगैरह जितना होना चाहिए उतना है, बहुत ज्यादा बहुत कम दोनों खराब होते हैं. और क्या ये सिर्फ कहने के लिए है, साइंटिफिकली प्रूवन है क्या? देखिए लाइफस्टाइल से भी, यहाँ ब्लड प्रेशर की अगर बात करूं, आपका वजन अगर आप कंट्रोल करते हो तो देखिए ब्लड प्रेशर और आपका बीएमआई अच्छा हो जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर 5 से 20 तक, हर 10 किलोग्राम ब्लड वेट लॉस के साथ 5 से 20 मिलीमीटर तक कम आ सकता है और नॉर्मल हो सकता है. डैश यानी डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी उसमें फ्रूट वेजिटेबल डाइट मेनली अच्छा होता है, उससे ब्लड प्रेशर कम आ सकता है. नमक कम रखने से ब्लड प्रेशर नीचे आता है. एक्सरसाइज रेगुलरली करने से प्रेशर नीचे आता है. शराब बंद करने से प्रेशर नीचे आता है. तो ये करना है दोस्तों. भगवत गीता में भी कहा गया था, आप जानते हो, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था. ये 6वां अध्याय अगर आपने पढ़ा है तो देखिए उसमें क्या कहा गया था. ये श्लोक 17वां है, आपको बताऊं. युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. He who is regulated in his habit of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the system of yoga. मतलब योग मतलब सिर्फ ये सब कुछ साथ में आता है तभी योग होता है. अभी मॉडर्न साइंस हैज आल्सो प्रूव्ड,
देखिए डीन ऑर्निश नाम के बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है अमेरिका में, उन्होंने एक स्टडी करके बताया था 1990 में। उन्होंने बताया था कि लाइफस्टाइल से आपकी बीमारी कम हो सकती है, ब्लॉक जो है वो कम भी हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या दिया था उसमें, वेजिटेरियन डाइट, स्मोकिंग बंद करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मॉडरेट एक्सरसाइज, उसमें उन्होंने योगा का भी वापर किया था। उसमें उन्होंने साबित किया कि ब्लॉक्स कम हो जाते हैं। मैं खुद एक ऐसे अभ्यास में संभव था उसमें, जिसमें ये किया गया था योग इंस्टीट्यूट सांता क्रूज में, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर जयदेव, जो योग इंस्टीट्यूट के प्रमुख सांता क्रूज से। और ये हमने सब जब साबित किया, दिस पेपर वाज पब्लिश्ड इन मेडिकल जर्नल आल्सो। दिस इज मेडिकल जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, इज द प्रेस्टिजियस जर्नल ऑफ इंडिया। 2004 में हमारा अभ्यास प्रकाशित हुआ था। देखिए मेरा नाम यहाँ पे एज अ कार्डियोलॉजिस्ट। एंड व्हाट डिड वी शो, बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ योगा लाइफस्टाइल ऑन रिवर्सिबिलिटी ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीज, मतलब जो हार्ट की बीमारी वो भी कम हो सकती है। तो हमने कुछ पेशेंट्स में उनके साथ में कंट्रोल रखते हैं इनके साथ भी, और क्या क्या अच्छा हो गया, उनके सिम्टम अच्छे हो गए, उनका काम करने का ढंग अच्छा हो गया, उनका वेट, कमर का माप कम हो गया, उनके खाने पीने का ढंग सुधारा, कोलेस्ट्रॉल अच्छा हो गया, शुगर्स अच्छे हो गए। हमने टेस्ट करके थैलियम और एंजियोग्राम करके भी साबित कर दिया, एंजियोग्राफी में ब्लॉक कम होते हैं वो भी। दोस्तों इस तरह लाइफस्टाइल में फर्क करने से बहुत अच्छा होता है। हमारे पास हमेशा वी ऑलवेज हैव सम एक्सक्यूजेस। पेशेंट को लगता है इतना करने से कैसा अच्छा होगा। डॉक्टर डोंट गेट कन्विंस्ड ओनली मेनली बिकॉज डॉक्टर्स नो दैट इफ ही डज समथिंग, मैंने एंजियोप्लास्टी की तो अभी ब्लॉक खुल गया। लाइफस्टाइल पेशेंट को मैंने बतानी है, पेशेंट ने करते रहना है। अगर पेशेंट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, बाद में वो मुझे गाली देगा। पेशेंट हैज टू फॉलो दैट वेल। वो नहीं करता है तो पेशेंट्स के पास तो अरे अभी क्यों एक्सरसाइज नहीं होता है, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, हमारे पास बहुत मेहमान थे ना तो खाना पीना कुछ नहीं, बारिश थी तो नहीं हुआ, ऐसे ऐसे कुछ एक्सक्यूज होते हैं। वी हैव टू सी दैट नो सच एक्सक्यूजेस वी हैव एंड रेगुलरली लुक आफ्टर आवरसेल्व्स, बी डिसिप्लिन्ड। फ्रेंड्स, आई एश्योर यू डेफिनेटली वी कैन मैनेज आवर हार्ट वेरी वेल। लास्टली, कोविड में हार्ट अटैक को क्या हुआ था, रिगार्डिंग दैट आई मस्ट टेल यू देयर इज सम गुड न्यूज एंड सम बैड न्यूज। रिगार्डिंग कोविड क्या हुआ था, क्योंकि कभी कभी मैं आजकल सुनता हूं कि कोविड के बाद लोग कहते कि वो बहुत अटैक आने लगे ना। फ्रेंड्स, दैट इज नॉट ट्रू। इट वाज एक्सपेक्टेड एक्चुअली, बिकॉज कोविड में क्लॉट्स ज्यादा होते थे, तो मैं लगता था कि क्लॉट्स होके तो बहुत अटैक आएंगे। कोविड में ऐसा भी होता था, कोविड के वायरस से भी मसल को तकलीफ हो सकती थी हार्ट की। लेकिन दोस्तों एक्चुअली हुआ ये कि कोविड के दिनों में, खास करके पहले कुछ दिनों में, 5-6 महीने में पहले जब हम लोग घर में पड़े रहते थे, याद है आपको 2020 में मार्च टू अगस्त, वी वर इंडोर्स, वी वर नॉट इवन गोइंग आउट। इनफैक्ट तभी नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स वाज लेस। एक फिलाडेल्फिया में सिंपोजियम हुई थी, वेयर है ऑल द हार्ट अटैक्स गॉन, कहाँ गए। हमें पहले लगा कि भाई पेशेंट नहीं आ रहे बिकॉज डरते हैं हॉस्पिटल में जाने को, क्योंकि भाई दर्द भी हुआ तो भी बोलते हैं नहीं कोविड होता है तो नहीं जाएंगे बाहर। दैट वाज पार्टली ट्रू, बट मेन रीजंस वेयर पोल्यूशन वाज लेस, स्मोकिंग, सिगरेट के शॉप तो खुले ही नहीं थे, लोग अच्छा सोते थे, बाहर जाना ही नहीं है, डे टू डे लाइफ का स्ट्रेस कम था, यू डोंट हैव टू कैच एनी ट्रेन, यू डोंट हैव टू बी इन ट्रैफिक जैम एटसेट्रा। बेटर फूड सब घर में खाते थे, एक्सरसाइज के लिए टाइम तो था जिनको करना था, वो सब करके कम होता था। दोस्तों इसके लिए द डिस्कशन दैट टाइम वाज, इनमें से सब कुछ हम लोग चालू रख सकते हैं तो परमानेंटली वी कैन वर्क ऑन हार्ट अटैक। बट वी नो दैट कोविड जाने के बाद पीपल हैव गॉन बैक टू स्क्वायर वन एंड अगेन हार्ट अटैक पेशेंट्स वी आर सीइंग। योग में फ्रेंड्स, योग में हम आज जानते हैं कि योग में इसका सबका विचार किया गया है। योग डजंट ओनली मीन अ फ्यू आसन्स, इट इज ऑलवेज यू नो आचार विचार आहार विहार सब कुछ, उसमें सब करके जब भी हम लोग आसन वगैरह करते हैं तभी है, इसके लिए योग ऑलवेज हेल्प्स। एंड योग में सब कुछ है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया इतना सब लाइफस्टाइल अच्छा करने से सब अच्छा होता है, तो फिर मैं फिर भी एंजियोप्लास्टी लोगों को क्यों करता हूँ, बाईपास के लिए क्यों भेजता हूँ। फ्रेंड्स, वी हैव टू रिमेंबर, इफ देयर इज फायर ऑन द हाउस, घर में अगर आग लग गई है तो हम लोग नहीं बोल सकते मैं मेरा कुआं खोदूंगा और बाद में पानी निकाल के आग बुझाऊंगा, तभी तो फायर ब्रिगेड लगेगा ना। तो जब इमरजेंसी सिचुएशन है, यू स्टिल रिक्वायर एंजियोप्लास्टी बाईपास, बट अदरवाइज लाइफस्टाइल चेंज इज फॉर एवरीबडी। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट, प्लीज रिमेंबर दैट हार्ट डिसीज कैन लार्जली बी प्रिवेंटेड। हम लोग कुछ सब कुछ खुद कर सकते हैं, बढ़ता है, इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग लाइफस्टाइल। हमारे कंट्री में वो कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, हमने कुछ करना है। डू नॉट इग्नोर एनी सिम्टम।
तकलीफ होती है, मुझे नहीं लगा हार्ट का है, गैस का है, सोच के छोड़ना नहीं है, चेकअप करवा लेना. कीप टोबैको अवे इन एवरी फॉर्म. तंबाकू बिल्कुल नहीं, सिगरेट वगैरह बिल्कुल नहीं. गुड डाइट, डिसिप्लिन, एक्सरसाइज एंड योगा, ये सब के साथ हम लोग जरूर हार्ट अटैक को दूर रख सकते हैं. एंड दोस्तों, देन वी विल ऑल कम टुगेदर and then Global Leader Foundation will come and make a new film called Dil To Majboot Hai. Thank you very much. Thank you, Dr. Shekhar, for sharing your expertise, your insights with us. I love your sense of humor, the way you put it up in very, very simple words. You have explained such a complicated topic, cardiovascular health, such a huge topic, in such simple words and in such a little time. Thank you so much once again. Thank you. Apurva? It's been amazing listening to you, I guess, your students would have never, possibly even blinked an eyelid. It has been excellent, sir. Now we come to the most exciting part of our webinar, that is the interactive question and answer session. I invite all participants to please type their questions in the chat box, and I request Dr. Shekhar to please kindly answer a few questions. Yeah, sure. I have time. I know. Actually, when I start talking, I generally don't look at the time, and suddenly I know that I may be overshooting your time. But so we have been totally blessed today to hear you, sir. We loved every minute of it. I'm sure nobody left the screen. Nobody even looked around here and there. So you can tell me a question, I think. Yeah, there is a question here. Ibrahim has a question. We start with the boss. Yes. Oh. No, boss. Boss is there. So excellent. Actually, I have no words to express. As Rupa said, we are absolutely still. I mean, I can well understand what your juniors also who have interacted and told me. But quick question. Just yesterday, we read in the paper something about a new laser technology which someone reported in Nagpur for vaporizing the heart vessels. So can you throw some light on that, sir? Yeah, of course. Now, yesterday, it may have come on WhatsApp yesterday to you. It's not all that new. And maybe in Nagpur News is also, okay, relatively new, okay. It has been there. It has been certainly there. Because again, it's a type of angioplasty. It is part of the angioplasty. It is angioplasty only. But sometimes what happens is, while doing angioplasty, the block is so hard that just with balloon, it is very difficult to open. Even in fact, you cannot even pass wire through that. When it is such thing, then there are various ways to open such opening, like blocks. One of them is using laser and making a hole with laser into that block. So kam se kam hamare then wire ja sakti hai and then we can open it. Okay. So laser is not a replacement of usual angioplasty. It is in addition for difficult blocks which don't open up easily with balloon. Okay. Yes, understood. Yes, definitely. And one more quick question, if I'm permitted, Rupa. This is actually on behalf of a friend who has been on antihypertensives for past almost, he's now 64, and right from the age of 40 he's on antihypertensives. But recently he was detected with some abnormalities and had to undergo angioplasty. So what could be the reason? Means blood pressure is normal because he's on antihypertensives. Yeah. See, as we were discussing, hypertension is one of the risk factors. It was not the only risk factor. Advancing age is a risk factor, which we cannot stop anyway. Like whatever hypertension would have caused, that is prevented. But whatever other risk factors, and we don't know his other risk factors, age is certainly advanced. So that we cannot stop. He may be having other risk factors which we don't know. So we have to work on all the risk factors. Suppose somebody is a high blood pressure patient, just by controlling pressure, he cannot say that now nothing can happen. He has to look after other also, because I know many patients, of course, they come that, okay, they have high blood pressure, they control pressure, but they have continued to smoke. Okay, like their lifestyle, diet was still bad, no exercise. So those factors will keep working on the blood vessel anyway. Right. Yes. Controlling blood pressure, of course, he has done very well. But all the factors we have to work upon. And that's why entire good lifestyle,
not just one of them. Like one of my friends, I know him very well. He is excellent in asanas. He will come and show you that is all yogic postures, but he can demonstrate only for half an hour. After half an hour, he has to take a break, smoking break. वो स्मोकिंग ब्रेक करके बोलते हैं हाँ अभी वापस मैं आधा घंटा दिखा सकता हूँ. So I tell him that ये तो कुछ आप योगा नहीं कर रहे हैं, ये तो रास्ते पे जो खेल बताने वाले होते हैं बच्चे लोग, Balancing. आपने बताया. So that's not yoga and that doesn't help that particular person. So we have to work on all the factors together. Then it certainly helps. Okay. Yes, sir. Thank you so much. Of course, we have to accept that some risk factors we cannot control. Advancing age we cannot control. Being a man we can't stop. And if there are genetic factors we can't change. Yes, very true, very true. Yes, sir. Thank you so much. So there's one question which you've already addressed, but I guess Dr. Ramdas Jadhav wants you to possibly summarize it again. How to reduce waste fat? Okay, okay. Of course, any fat, reducing any fat on the body is of course diet plus exercise together. Of course, first we have to see when you are working on your weight, diet and exercise you are doing. We also have to see whether there are some other medical factors which have to be addressed. For example, thyroid. There is a thyroid disease. Then certainly it has to be controlled. Then only your diet and exercise works better. But again, it is diet and exercise. And of course, we know that in our group, there are experts in this field also. Nutritionists are there, including my little sister, Veena Yardi. So she can even tell you what to do in diet, but proper diet and exercise. That even for waist circumference, we have to do the same. Just by looking after just diet, it's doing some asana. Some people say that, oh, my kamar ka ye exercise karunga, to mera fat kam ho jayega. No, not only kamar ka exercise. You have to remember that you have to burn that fat. So we have to have full exercise and diet, of course. Diet is essential. Doing exercise alone also is not enough. So there's one more question on the same lines. To minimize cholesterol, what are the precautions that you have to take, including diet? Okay. Again, we have to remember, first thing that we have to remember is cholesterol in our blood comes by two routes. One is from what we eat, and secondly, what our liver makes. We have to remember that since I told you that cholesterol is an essential substance in the body. Cholesterol is not poison. It is essential substance, so your liver makes cholesterol. And sometimes genetically, if something is wrong with the liver and it is making too much of cholesterol, that cholesterol also is harmful. So what we can do with diet, of course we can do with diet. So uske liye we have to see that charbi ka khana kam ho, extra calorie wala kam ho, that we have to do. For HDL cholesterol, we have to have more exercise, no smoking. That also we have to do, because smoking say HDL, acha cholesterol burns out. So to have proper cholesterol report, diet, exercise, no smoking. Again, we have to remember that if there is disease like thyroid, with thyroid disease also cholesterol can go up. So that if it is there, it has to be controlled also. So ultimately, diet, exercise, controlling thyroid, etc. But in spite of all that, when cholesterol is still high, medicine has to be taken. Taking medicine is not bad. Unfortunately, most patients that I meet, उनको लगता है दवा खराब है. Suppose they take medicine और अच्छा भी हो जाता है, तो in the first follow-up, the first question is, दवा कब बंद करनी है? And I always ask them that, अगर medicine is causing bad side effect on you, yes, I must think that either stop or change the medicine. But if it has not done, it is doing only good to you, then you have to continue. Some people feel that अगर मैं दवा लेते रहूंगा, that cholesterol will go down and become zero. That will never happen, because you'll require some maintenance dose to maintain that also, because medicine also doesn't make any permanent change in the body. What it certainly does is a chemical reaction where cholesterol is being formed in the liver, and it blocks to some extent. It cannot block everything. So therefore, as long as that block is there, cholesterol manufacturing may be less. But the moment you remove that block, cholesterol can again increase also. So if required, medicine should be taken. Especially if diabetes is there and heart disease is already there, cholesterol medicine has to be taken.
Thank you so much, sir. Ms. Preeti Pangu has raised her hand since a long time. Maybe she can unmute and ask her question. Ms. Preeti Pangu, do you want to ask a question? She has gone, I think. Okay. So there's one question again, which talks of what about consumption of oil to heart health, on heart health? You haven't touched upon that part. Oil and fats. Okay. Those nutritionists will always tell you more about it. Okay. Now, as a cardiologist, let me tell you, it is less important which oil you are taking. It is more important how much oil you are taking. Okay. Because we always say that, what is healthy consumption of oil? That is about 3 teaspoons of oil, plant oil, per day for an individual. Or roughly, I would say that half a liter of oil per person per month should be the oil consumption at home. So if there is a family of 4, you should not be buying more than 2 kilograms or 2 liters of oil. That should be it. Of course, now there is 19-20 ka farak hota hai. Some people say that, okay, canola oil is the best. Some will tell you that, okay, sunflower oil is the best. Okay, whichever oil, but we have to see, even most individuals, most people take groundnut oil, seeng ka tel khate hain. So that is not bad if it is limited to half a liter per person per month. But additionally, people take ghee or butter or cheese. Some people, what they do is, okay, हमारे पास तेल तो कम होता है, लेकिन हम घी बहुत लेते हैं. And some people feel that ghee is very, very good. Please remember that ghee also, or butter or cheese is also fatty food, and more than 1 teaspoon per day of this continuously on an average is not healthy. Some people say that, sometimes they used to advertise some oils as cholesterol-free oil. Earlier, I'll not name, but some oils used to say cholesterol-free oil, cholesterol-free oil. We have to remember one thing, that there is no cholesterol in any plant. So the plant oils which we take, whether it is groundnut oil, safflower oil, sunflower oil, or whatever, even coconut oil, none of them can have cholesterol. They can have fat. See, oil is fat, but cholesterol is a chemical substance, is not the property of plants at all. It is present only in animals. We are animals. Okay, so therefore we have cholesterol. Now, milk we have accepted as a part of vegetarian food, but we have to remember that milk doesn't come from any plant. It comes from animal only. It's an animal product. Milk has cholesterol. All milk products have cholesterol. Ghee has certainly a lot of cholesterol. So larger amount, the medicine that I am practicing will not permit. I am saying that because some people tell me that Ayurveda says a lot of ghee you can take. I won't disrespect Ayurveda, but I must of course tell you what I have learned. I have not learned Ayurveda, so I should not be discussing about that. But otherwise, whichever oil you are using, 3 teaspoons of oil per day and 1 teaspoon of ghee would be, just adequate for maintaining good health of the heart. Thank you so much, sir. That has answered another question which had come up. So there's one more question before we allow Ms. Harleen Bakshi to unmute and ask her question. Is over-exercise really bad for heart health? Over-exercise. Okay, right. Now it all depends on your definition of over-exercise. Now, let me, sometimes, of course, you hear that people during gymming, somebody dropped dead, etc., and then people start wondering what happened, etc. And some people, in fact, started saying that exercise itself is very bad for heart. We have to remember that, okay, what we have to remember is you have to have regular aerobic activity. Aerobic activity for heart, when we are talking, aerobic activity is walking, jogging, swimming, cycling, all these, or playing games, like I said, they are all aerobic activity. Okay. Now, when you are regularly doing an activity, generally your body adapts to it very, very well. So anybody who is not doing exercise for whatever time, suddenly he wants to do a lot of exercise, can cause some difficulty in him, especially in presence of other risk factors. Suppose I never done any exercise and I hear from somebody
that 1 hour jogging is good, and tomorrow I start doing 1 hour jogging, it can harm me. So I had to build up exercise gradually also. Start slowly, gradually build up, get used to your exercise. And when you regularly do exercise and you are continuing the same exercise, it should not be harming. Again, when you are starting any new exercise program, especially at an advanced age, you must get examined by your usual doctor who tells you what is your basic stage of health right now, what is your stage of heart disease, if any, also, and accordingly which exercise to do or which exercise not to do. So that medical advice should be taken. So yes, too much of exercise is you are not doing anything and suddenly you do too much of it, becomes too much for you. Thank you so much, sir. Ms. Harleen Bakshi, ma'am, would you want to unmute and ask sir your question? Yeah. We'll take this one last question, sir. Yeah. Yes, ma'am. Thank you, Dr. Shekhar, for a wonderful session. In fact, thank you so much. So this question is concerning my mother. She's a 78-year-old female with rheumatoid arthritis, diabetes, and obviously heart problem, because she was told for a bypass when she was 71. But she refused to undergo that surgery. She's 77, 77 plus now. She's on her good medications, though on and off, because she's staying alone. My father is not around. So now my main question is, I'm unable, if her blood pressure, the systolic one, generally raises up and goes up to somewhere around 185 by 100 also. But when she's on regular medication, she eats well, she exercises, though she can't do much of exercise, it comes down to 145, but the down pressure come down to 56. So my question is it okay, the lower pressure going so down? Okay. With our medications? Yeah. Now let me tell you, whenever, of course, we find that, and it must be by the numbers themselves, I can make out it is on digital machine at home. So sometimes it so happens that digital machine can show the diastolic, that is a lower number, little lower than what it is. Okay. So sometimes you can get her examined by the doctor with his usual blood pressure machine. Okay, suppose that is also low. Then there can be one more reason, because sometimes this one of the valves can be leaking, aortic valve, and in that the lower one can become low. So it should be checked whether she has that, whether there is medical reason for low diastolic pressure. And okay, yes, and then of course, and then when you calibrate the machine also with the mercury machine, you can know if there is any difference in the two machines also. Otherwise, I tell you, the lower pressure at her age should be above 70, certainly. Not below 70, we don't want, especially with the heart disease, because especially the heart blood flow, the heart gets blood flow during lower pressure, not the upper pressure. Okay, and therefore, lower pressure. So this is the triple vessel disease only. Yeah, exactly. Yeah, this is a so triple vessel disease they are told. Triple vessel disease and not operated. So that yeah, means, no, very true. So very across true. the block vessel, we don't want less blood flow. So 70. Too much of stress. Yeah, she doesn't eat properly. That's there. But I got her echo and ECG done. So the doctors now say, obviously, Fortis hair only. The doctors now say that the only thing we can do is again repeat her angiography. But she's highly arthritic, and doing it again from her arm, she says, I don't want to get it done. So now I am in a fix again, let me tell you, doing angiography is advisable only if she is willing for doing further procedure. Doing angiography is again knowing that, okay, earlier there were blocks, whether they advance further or not. Okay, nothing more we can know. And that much we know, and after that, are we going to do anything? If we are not going to, if we are very certain we are not going to do anything, then there is no point. Okay. Unless sometimes what happens is we do angiogram and we say that, okay, though she is not willing for bypass surgery, but maybe I can reduce her problem, not totally take it away, but I can reduce the problem by doing angioplasty of one of the major blocks. Some blood flow increases to the heart. So there were, without surgery, some blood flow can be increased, if that can be beneficial. But that, of course, the doctor who does angiography there and there will be able to tell you. Okay, because my main concern to talk to about her was about her systolic blood pressure, because she stays alone. So with her so much of medications,
Yeah. So is there any particular test for this leakage of wall, what we are talking about? That is Any echocardiography. particular, That is echocardiography. sorry? That is But echocardiography, which you say is done. echo, And that means it is yeah, not there. That means it that says leakage is not there. 65%. No, 65% Yeah, it says is pumping 65. strength. That is pumping strength. Yeah, But of course, they but must no, look at the valve nothing also. So they alarming. must have seen at the valve, Yeah, and it must be okay. yeah, okay. But now we can do nothing about the systolic blood Why pressure. not? There are medicines which will bring down selectively that systolic blood pressure also. Why not? We don't want it to be high, because having high systolic pressure is not good for her also. Thank you so Thank you much, so sir. much, Thank sir. you so much. So Yeah, there are thank two you. more questions. Do you have the time to take it? I have time. Okay, so that's really nice. One is, if my BP remains 85/55 and it increases to 110/70, does it mean high BP, or will I have the same cutoff 130/90? BP goes up to 110/70. If my BP remains at 85/55, Yeah, that is usual BP, and it and goes. it increases to 110 to 70. Yeah, so 110. why it should mean- we call it high blood pressure? I think that's the question she wanted to ask. That means that uppermost limit of this particular gentleman or lady also is below 130. So why will we call it high blood pressure? No reason. And one last question. Does COVID vaccine cause heart issues such as the fourth dose? No, honestly, we must say no, because like there was always some discussion like this. Now, as you know, in our country, 200 crore doses diye gaye hain. More than that, more than 200 crore doses of COVID vaccine have been given. If that was causing, we would have seen floods of heart disease, like that we have not seen at all. All of us have taken also in the hospital, entire staff. We have not seen one example also where nothing else was wrong, only because of COVID vaccine somebody came with heart disease. No, we have not seen a single. We could not pinpoint for any individual that this was because of COVID vaccine. Thank you so much. So that was very convincing, and I think you're even clearing up so many myths that we have. So one question: does heart attack happen due to emotions? Emotions, yes. As you know, when we are discussing about all the risk factors, stress, certain stress hormones, when they are flowing in the blood vessels, they can increase the chances of blood clotting also, and the injury to the blood vessel also. So yes, and of course, during emotions, the heart demands also go up. Heart races more, heart rate goes up, blood pressure goes up. So yes, so at an emotional outburst, yes, it can happen. In the films also, you're talking about films right from beginning. So in films also, very frequently they show that old man shouting on the daughter, "और तुम्हारे वो मालिक के साथ शादी करने का है, तो अब भी क्या भी मेरा घर छोड़ के जाओ." And he puts his hand on the chest and drops there. So yes, with any burst of emotion, yes, this can happen. If there is already some disease, not only any normal individual with that. Thank you so much, sir. You've got a way to make us understand things. Mr. Kalpesh Shah, I think we will just take one last question, sir, before we stop troubling you further. Yeah. Mr. Kalpesh Shah, would you want to unmute yourself and ask your question? Mr. Shah, are you there? Does surgery required in cardiomegaly, or can it be controlled through diet, and how much is one question? Yes, sir. Cardiomegaly only means large heart. Megaly means large, isn't so? So large heart means some disease which has caused large heart. So it is bypass is not done for large heart. Bypass is done for the blocks in the arteries if they are. So multiple blocks causing lower function of the heart. If that has caused enlargement of the heart, then doing bypass will be helpful. But if heart has become large because of something else, suppose valve leakage and valve disease, etc., there you do bypass surgery is not the question. Treat the valve disease. Or if uncontrolled blood pressure and therefore heart has to exert more and become larger, cardiomegaly, control blood pressure. So we have to treat the specific disease rather than only size of the heart. Thank you, sir. Thank you so much for patiently answering all the questions. We hope everyone, I'm sure, it's not we hope, I'm sure 100%, 200%, everyone has found this session very informative and insightful.
We've had on an average 75 people who've logged in and around 70 people who were there from the beginning till end. Thank you so much, sir. And we hope to be joining hands with you by staying active, concentrating on that. Ma'am, can I raise one small journey. question? Somebody Sorry to wants disturb. to ask one question. Yeah, sorry to disturb. Ramdas Jadhav. Okay, sir. Okay. Yeah, I'm Dr. Ramdas Jadhav. Sir, good evening. My simple question is that you have not elaborated much about the calm and quiet sleep, because if you don't sleep properly, then your all health gets disturbed, which I am facing right now. So that's why I am asking this question. You should get sleep more than 6.5 hours or plus as per your age and work and related to that. So can you elaborate small on? Of course, I could not give long, as you rightly said, I did not elaborate on that. But as you know, when managing stress, the first thing I said is proper sleep. Proper sleep is essential. And most importantly, rather than talking in terms of number of hours, I always say that when you wake up in the morning, if you wake up fresh, that means your sleep was good. You know, like if you wake up and you look outside the window and you say, "Oh my God, sun is already coming out," that means utna padega kya? If that happens, that means you have not completed your sleep. So adequate sleep has to be there. And we learn ourselves. We come to know that, like Dr. Jadhav said, that he requires about 6.5, 7 hours. So yes, when you come to know, and you also come to know that morning, what is the time that you have to start working, and therefore at what time you have to wake up, you know. So accordingly, you should time your time of going to bed, and you should complete your sleep. That, and without setting any alarm, if you wake up, it is more likely that you have completed your sleep. And so therefore, yes, of course, it is absolutely essential that good sleep you take, because it has been proved time and again that inadequate sleep causes not only a heart disease but many other diseases, including your acidity and some cancers, blood pressure, uncontrolled diabetes, and everything. And therefore, if you remember, I already also talked about that snoring. Snoring actually is not good quality of sleep. And when it is significant, actually you have to treat it. There are ways to treat snoring. That is, when it is extreme, which is called as obstructive sleep apnea, you require some treatment for that, so that you get better quality of sleep. Otherwise, certain diseases go up. Yes. Right. Thank you, Dr. Jadhav. Thank you, sir. Thank you. So we have one more hand raised up. I don't think so. We are going to let you go today. Ms. Tamanna Walicha, would you want to unmute and ask your question? She is open, I think. Yeah. Do you have a question for sir? You'll have to unmute before speaking. I want to only thank sir very much. That's all. Thanks a million. Thank It you. was really pleasure being with you today. Thank you very much, sir. Thank you very much. Lovely. So there's one more hand raised. That's it. Nobody else is there. So over to Dr. Veena Yardi, your little sister. For సో అది కహాని. ఓకే, ఓకే. తర్వాత మరొక లైవ్లో, అప్పటి వరకు కొద్దిగా ఉంది. సో కనబడుతుంది కదా ఇల్లు ఎలా ఉందో, కొద్దిగా గడిబిడిగా ఉంది. కనబడుతుంది కదా మీకు ఇల్లు ఎలా ఉందో, గడిబిడిగా ఉంది. ఓకే, ఈ గడిబిడంతా పోవాలంటే దడిబిడిగా ఉండాలి. దడిబిడి అంతా రావాలంటే గడిబిడి పోవాలి. ఈ గడిబిడి ఈ గడిబిడిలో
గడే బిడే బిడే దడే గడి గడే బిడే బిడే గడి బిడి బిడి గడి గడి గడే బిడి బిడే. సో ఈ గడిబిడి గిడిబిడి గిడిబిడి గడిబిడిలో మనం మళ్ళీ మరొక్క లైవ్లో కలుద్దాం. ఈ లైవ్ నేను స్పాయిల్ చేయాలనుకోవట్లేదు నా నాన్ సెన్స్తో. ఓకే, సో ఈ లైవ్ని ఒక ఇన్ఫర్మేటివ్ లైవ్గా ఎండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన చాలా ఫేమస్ పర్సన్, ఆర్టిస్ట్ క్యూరింగ్లో, ప్రివెన్షన్లో చాలా నాలెడ్జ్ ఇస్తూ ఉంటారు ఆయన. సో ఏషియన్ ఆర్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ మీకు అందరికి తెలిసి ఉంటుంది ముంబైలో ఎంత ఫేమస్ అయిందో. సో విల్ జాయిన్ టు నైట్. ఓకే, కాస్త ముఖం మీద కడుక్కొని వస్తాను. ముఖం కడుక్కోలేదు, డైరెక్ట్గా వచ్చి అదే అటెండ్ అయ్యాను. సో మళ్ళీ జాయిన్ అవుదాం, ఓకేనా? అంతవరకు మీరు నన్ను క్షమిస్తారని నేనైతే ఆశిస్తున్నాను. మీ కొందరు క్వశ్చన్లు అయితే అడిగాను, వాటికి సమాధానం కూడా దొరికింది. సో గడిబిడి దడిబిడి దడిబిడి గడిబిడి. థ్యాంక్ యూ. La 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 la. కాస్త రెనోవేషన్లో ఉన్నాను, మళ్ళీ తర్వాత కలుస్తాను.